So, hello everyone, I'm Sudipta welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. So, tell me, how are you all? Very good evening guys. भाबुथिबो कि 10 टा आसिया कथा कोन 7 टा रु क्लास कहितिल ना गुरु मैराथन अछि. Thank you for asking Ahalya. I'm absolutely fine. And मु केमिति देखा जाउची सेमिति ही अछि. Okay. शुभ संध्या. जल्दी जल्दी कनेक्ट हुआ so that we will discuss. आजिरा क्वेश्चन नंबर सुनी के पैनिक हवनी मैराथन कहिची ना so important MCQs आनिची 150 टा so आजिरा MCQs नंबर 150. इलेवन टा तो हम ही बिकॉज मो टाइम तो तुम मैंने जानी केते ना 10 to 11. थैंक यू रोहित. जिबा बट क्लास कथा कही नथिले संडे रे नो क्लास. संडे रे एक्चुअली तो क्लास हुए नी बट दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल बिकॉज आपण माने भी जानी चंती बिकॉज एग्जाम आपण माने करा ऑलमोस्ट 15 डेज भला थिबो. आपण जदी संडे भाबी केमती चिकन मटन खाई कि या फिर चिकन पकोड़ा खाई कि पाग देखि कि सोई पड़िबे ताहले तो आसी के आपण को लाइक गवर्नमेंट आसी कि घरे बसी के आपण माने को देई दबो ना अपॉइंटिंग लेटर. सो अपॉइंटमेंट लेटर पई आपण माने को पढिबा को पड़िबो संडे मंडे रोज. ओके संडे हो या मंडे रोज आओ क्लास में स्टार्ट करिबा. टिके कनेक्ट हुआ हम पाखे बहुत टाइम अच्छी. डोंट वरी हम पाखे बहुत टाइम अच्छी. टिके शेयर करो क्लास को लाइक शेयर टिके हो क्लास रो ना कौन कहूच. गुड इवनिंग एवरीवन. संग नहीं पाठ पढ़ा सी ऑन ए सीरियस मूड आई एम टुडे बुझिल गोटे सीरियस मूड अच्छी सो पूरा पाठ पढ़ा धुआंधार आज हम. तो पिला टिके कनेक्ट होंदु ता पूर्व तुम मानू टिके कहि दिए दैट महापैक ऑलरेडी आपण माने जानि संति ता प्राइस केते ना मैम 3499 अछि तार प्राइस एंड यार वैलिडिटी गाइस 1.5 ईयर एंड ए 1.5 ईयर भीतर जत्ते भी आपण मानकर ओडिसा गवर्नमेंट रो एग्जामिनेशन आसुची जत्ते भी एग्जामिनेशन आसुची या अंडर ही आपण मानकर कोन ना मैम कवर अप हे जिवो इंक्लूडिंग दिस उत्कर्ष बैच इंक्लूडिंग दिस पीओ हमर पीओ आरआई अमीन से बैच एंड गाइस हमर जदी सेक्रेटेरिएट एसो आसुची ता बैच देन हमर जदी डब्ल्यूयू आसुची जेई आसुची एंड हाईकोर्ट एसो आसुची जत्ते एग्जामिनेशन कहला 1.5 ईयर भीतर एक्सेप्ट द ओसीएस 1 जत्ते भी अछि आपण मानकर एई महापैक अंडर रे ही कवर अप होबो. ओके सो सेम टीचिंग रे भी आपण मान जानि संती वैलिडिटी 1 ईयर प्राइस अछि 1499 पीसीएम सीबीजेड और आर्ट्स बैच आपण मान नो चंती देन वैलिडिटी रहबो 1 ईयर. with that guys आपण मानक पय गोटे कोट आजीरो that success is not about having all the answers. जेमति कि आपण भाबु छन आंसर दोगुनु भूल हे जिवो so success is not demanding that actually. So success is not about having all the answers, it's about being willing to ask the right questions. बहुत क्वेश्चंस तम लाइफ रे आसीबो कोटा तम पय इंपोर्टेंट अछि से क्वेश्चंस रा आंसर तमे खोजि के पाइबा दैट इज द इंपोर्टेंट थिंग no matter in the professional life or in the personal life. Okay chalo the first question guys the unit of force is the first guys the unit of force kon अछि mate कहलो को ए सिंपल रु जिबा टफ को व्यस्त होनी न्यूटन श्योर पूरा धुआंधार आंसर दबो पूरा स्पीड रैपिड फायर टाइप रो रहइबो हला के रहइबो ना मैम न्यूटन को मैं जानछे दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड तार फार्मूला कोन कहूची ना 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स दैट द फोर्स नीडेड टू एक्सीलरेट 1 kg मास. गोटे फोर्स हमर एक्सीलरेट हुए टू नीड द 1 kg मास एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज द कोन न्यूटन. एंड हमें कहि पारु छे कि फोर्स इज इक्वल टू कंसीडर केमिति करछे ना मैम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन F इज इक्वल टू m into a. जानि छ ना जानि ना जानि छ तो वेरी गुड. सो हम मन रखि परिबा
एटा हमर सर आइजैक न्यूटन कहा ना अकॉर्डिंग हेसी सो न्यूटन आपण मानकर फॉर्म हेसी दिस इज अकॉर्डिंग टू द नेम सर आइजैक न्यूटन मन रखिबा क्लियर वेरी गुड जोटा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आसुची क्वेश्चन आसुची एसएससी हैला ओपीएससी हैला रेलवेज आसिला क्वेश्चन गोटे मस्ट आस्किंग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन सो याको मन रख मते कहि देला जूल कहार हबो मते कुआ जूल कहार हबो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट ना मैम वर्क या फिर एनर्जी जदी पचारिबो कोन ना मैम वर्क पचारिला और इंस्टेड ऑफ दैट जदी एनर्जी पचारिला जूल इज द यूनिट ऑफ दैट सेम मते कुआ वाट कहार यूनिट हबो ना मैम दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट ना पावर कोन पावर इज वाट पर सेकंड सो पावर पचारिले आपण माने मारिबे कोन ना दैट इज द यूनिट ऑफ व्हाट सेम जदी पास्कल पचारे गला सेम गाइस जदी पास्कल पचारे गला ताहले राइट आंसर कोन चूज करियो मते कुआ जदी पास्कल पचारे गला प्रेशर वेरी गुड सो द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट ना मैम प्रेशर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज द पास्कल एति के मन रख परिबा वेरी गुड सने कहचे 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर सो मन रख 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर एति के मन रहिबो वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू Which law explains the relationship between the force, mass and acceleration? Tell me which law हमको explain करूची the relationship between the force, mass and acceleration. एबे ही कहली F is equal to ma'am m into a. Force is equal to mass into acceleration. कौन हबो? को law according हबो? Very good. एठी बट कोन पचाछि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ न्यूटन्स लॉ पचारिनी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ सो राइट आंसर कोन हबो ना मैम न्यूटन सेकंड लॉ मन रखि परिबती कि वेरी गुड सो मते को न्यूटन सेकंड लॉ कोन कहूची दैट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अनुसार मन रखिबा एग्जांपल हमें कोन कहबा ना जते हम फुटबॉल को एक्सेलरेट करूचे जते बेले ओटे किक मारुचे से कोन फुटबॉल टा इटसेल्फ हार्ड लागुची बट किक मारला पर से उडी की जाउची ना so this is equal to force apply कला परे तार acceleration ने change होची next मते कहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमको कोन प्रोवाइड करूची न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमको कोन प्रोवाइड करूची ना a body continues in the rest or in the uniform motion unless an applied or any external force applied on it जे पर्यंत कोनोसी बाह्य फोर्स हमर अप्लाई हेइनी जे कोनोसी गोटे स्टैटिक कंडीशन जदी बॉडी अछि से स्टैटिक रे रहिबो जदी हमर मोशन कंडीशन अछि देन मोशन कंडीशन रे रहिबो दैट इज द लॉ ऑफ व्हाट ना मैम इनर्शिया यस और नो वेरी गुड सो फर्स्ट लॉ को एमिति क्वेश्चन आसे लॉ ऑफ इनर्शिया is also called as which law first law second law or third law that is the first law yes or no guys very good then mate ko newton's third law kon कहउची ना that is very easy every action has an equal and opposite reaction आपण माने एग्जांपल नै परिबे कोन ना मैम रॉकेट लॉन्चिंग the rocket हमर लॉन्च होतले एग्जॉस्ट करूची थ्रस्ट को that is the perfect example for the newton's third law एटा मन रख परिबो very good आ law of gravitation कहले कोन बुझुचो law of gravitation किए बाहर करथले ना मैम न्यूटन बाहर करथले केबे ना 1900 ना सॉरी 1687 रे हमर न्यूटन डिस्कवर करथले द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर एति मन रख परिबो रिलेटेड टू द सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स एंड द टाइड्स ता अकॉर्डिंग अपन माने ग्रेविटेशन को मन रखिबे क्लियर नेक्स्ट चलो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली हमर वैक्यूम रे लाइट रो स्पीड गाइस केते रुहे मते कहिलो वैक्यूम रे लाइट रो स्पीड गाइस केते रुहे 3 into 10 to the power केते ऑप्शन बी 10 to the power 6 रुहे हैं अच्छा वेरी गुड सोल इवनिंग ऑप्शन बी कौन में मारिच Option A will be the right answer 3 into 10 to the power 5 meter per second approximately eta hochi 3 but eta hochi 2.998 meter per second square so meter per second okay meter per second so hame taku consider karuche as what na 3 approximately clear gala sabu gala to very good chalo next mate ko the SI unit of electric current ebe ko mate SI unit of electric current ame kaha ku consider karuche इलेक्ट्रिक करंट कथा पचारले आपण माने काहा को कंसीडर करिवे ना मैम करंट केते एंपियर बॉल एटा
कहूचे ना नहीं ना तुम मैंने कहूचे केते वोल्ट रो बॉल राइट बट करंट जते बेले फ्लो करूछ हमें कहूचे अच्छा केते एम्पियर रो तारटा बुलीची मते कहिलो सो हमें करंट को कोथिरे ना सिंबलाइज करूचे एज द एम्पियर कोथिरे ना मैम एम्पियर क्लियर क्लियर सो हमें कहि परिया कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय द 1 सेकंड सो एसआई यूनिट इज व्हाट ना एम्पियर सो नेम्ड आफ्टर कहानो ना एम्पियर को हमरा किए डिस्कवर करथिले गाइस ना एम्पियर वाज डिस्कवर्ड बाय द एंड्री मैरी ताको ना कोन थिला ना मैम एंड्री मैरी एम्पियर क्लियर क्लियर मते को सेम वोल्ट कहार हबो अच्छा ठीक अछि नारायण सो मते को वोल्ट वोल्ट कहा को आसीबो वोल्ट कहार ना मैम दिस इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस कहार ना मैम दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम मते ओम रा कहि दियो एंड कूलम रा कहि दियो ओम जदी कहउछ ताले राइट आंसर कोन हबो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी गुड दीपक सो ओम कहिले कोन बुझुछ ना मैम दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कहार ना मैम दिस इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस रा में बुझुचे क्लियर देन कूलम कहिले कोन बुझुछ कूलम कहिले चार्ज श्योर कूलम कहिले कोन बुझुछ यूनिट ऑफ वेरी गुड दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज चलो नेक्स्ट मते को A body at rest will remain at rest unless acted upon by an external force. This is Newton's law तीनिटा law ता according एटा गोटे law guys हमरा हबो. So एटा को law according आसियो मते कुहो को law according ये हबो मते टिके कहिलो एबे ही पढैतिली that is the Newton's first law or that is called as what? ना मैम law of inertia. Sorry ये नहीं second law हमर law of inertia ना this is not Newton's first law is the law of inertia yes second law काई कहउछ law of inertia is the Newton's first law yes guys okay चलो नेक्स्ट इबा न्यूटन सेकंड लॉ ऑलरेडी तमन कहछि न्यूटन थर्ड लॉ कह देछि अच्छा लॉ ऑफ एनर्जी मते कहिला लॉ ऑफ एनर्जी का को हमें कहउछे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट मींस द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजीशन or one state to the another state that is the law of energy माने पडुची एग्जांपल आपण माने परिबे वाटरफॉल जेते बेले वाटरफॉल होउची टरबाइन घुरुची देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होउची कोथिरो ना मैम वाटरफॉल होउची एग्जांपल गोटे माइंड रखि दियो सो दैट एटा मन रहिबो वाटरफॉल होउची देन हमर कोन आसुची ना मैम टरबाइन बुलुची टरबाइन बुलला फलटे हमर कोन होउची ना मैम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होउची am I clear guys yes or no neither be created nor be destroyed very good chalo next question mate kuha which mirror is used in the vehicles as a rear view mirror mate pacha ko dekhiba pai vehicles re gote mirror ame lagauche seta ko mirror lagauche plain mirror to kebe lagau nothibe either convex or concave bhitere pila mane confuse hondi so mate right answer tike dela right answer kon hoba tike mate diyo what will be the right answer option very good that is the convex mirror concave mirror plain mirror या भीतर ऑलरेडी त मैंने जानि छ चलो चलो हां next so in which medium does sound travel faster अच्छा मते कहला sound travel faster को medium रे हमें कहूचे which medium रे हमर like in which medium sound travels faster yes मौसुमी हेडलाइट रे हमें कनकेव मिरर यूज करू छ वेरी गुड सो व्हिच मीडियम द साउंड ट्रैवल करे फास्टर को मीडियम एयर करे वाटर करे स्टील रे करे या फिर वैक्यूम रे करे yes guys that is कोड ना मैम सॉलिड रे करिवो सॉलिड रे हमें कहू छ एंड सॉलिड मींस हमरा को ना स्टील रे करिवो ओके चलो नेक्स्ट which of the following is a non renewable source of energy या भीतर हमें कहा को non renewable source कहू छ that means that cannot be renewed again so what is that solar wind biomass coal कोटा को हमें ऑड वन आउट कर दियो सोलर को तो हमें रिन्यू करी चलीबा हां ना नहीं विंड को भी करि परिबा बायोमास को भी करि परिबा कारण बहुत टाइम तक हमर जन माटी भीतर रुहे कोनोसी जैविक पदार्थ देन से हमर कन्वर्ट हो जाय बायोमास को तो ले कहा को करि परिबानी ना मैम कोल को करि परिबानी एलिमिनेट करो नेक्स्ट व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन मते कहिलो मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट ताकू करि पारु छी ओके सो व्हिच डिवाइस कन्वर्ट दैट which device convert mechanical energy into electrical energy motor generator transformer or battery
ऑप्शन बी को लॉक किया जाए वेरी गुड कहा को ना मैम जनरेटर ही हमर कन्वर्ट करूची कहा को ना फर्स्ट मेकानिकल एनर्जी देन बुलिला परे से हमको कोन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दोची एज अ डीसी हमें कोन कहूची जते बेले करंट पड़ोची देन हमें ई जनरेटर ही इलेक्ट्रिसिटी कोन मैम कंज्यूम करूचे यस और नो यस मैम नेक्स्ट चलो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करिया पई को इंस्ट्रूमेंट हम यूज करूचे मते कहो the instrument we use to measure the atmospheric pressure. Good evening, Alisa. Good to see you again. चलो right answer कौन है very good. जेते बेले atmospheric pressure कहि दबा ताहाले आखि बंद करके आपण माने कोन ना मैम बारोमीटर आमे चूज करिवु ये सर नो थर्मोमीटर हाइग्रोमीटर हम ऑलरेडी जानि छ हाइग्रोमीटर कोथि पय मते को थर्मोमीटर आपण माने जानि संदी टेंपरेचर स्केल हाइग्रोमीटर एंड एमीटर टिके कहिलो जोटा इजी सेथिरे जाओनी थर्मोमीटर आमे कोथि पय सॉरी हमरा हाइग्रोमीटर कोथि पे यूज करछ मते कहला वेरी गुड सब बेले मन रखिबो H फॉर हाइग्रोमीटर H फॉर कोन ना मैम ह्यूमिडिटी सेम मते को एमीटर कोन मापुछ सेम को एमीटर कोन मापुछ एमीटर को आसा एमीटर को कोन कहछ ना मैम त हमें करंट रो फ्लो को चेक करछ दैट इज इन द एमीटर नेक्स्ट मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी मते को स्केलर क्वांटिटी भीतर आपण मानकर किछि डाउट आसुछि कि यस पिंटू पात्र राइट सॉरी पिंटू पंडा को मते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी जेते बेले स्केलर क्वांटिटी कथा कहूची हां लाइक केते बेले भी आपण माने कोन प्रॉब्लम फेस करचंती कि ना व्हाट इज स्केलर व्हाट इज वेक्टर एटा आपण को मने रखिबारे किछि प्रॉब्लम होउची कि गाइस को मते टिके ऑप्शन डी पासला फोर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी और स्पीड अरे वाह पिला हमर भलो अछंती भलो नॉलेज अछि साइंस ऊपर मु भाबुतली खाली ओडिसा जिके त माने उडे दोछ ना तो साइंस रे उडोछ ना कि अच्छा मम्मा सॉरी ओके सो स्पीड को हमें कौन कहूचे ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन बजे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी रेस्ट ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी सो स्केलर क्वांटिटी हमें का कहूचे नाहर जहार ओनली मैग्नीट्यूड थिबो एंड जहार डायरेक्शन नथिबो ओनली मैग्नीट्यूड गाइस थिबो and there is no direction we consider them as the scalar quantity rest all jaha pakere both guys kono na magnitude thibo magnitude as well as direction भी थिबो ताको हमें कोन कहउछे ना दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी एति के मन रहि परिबो वेरी गुड एंड एटा बहुत ही लाइक एसएससी रेलवेज ए सब रे क्वेश्चन ता डिफरेंट टाइप रे पछारे बिटवीन द स्पीड वर्सेस वेलोसिटी एमिति करके आपन को पछारे ओके चलो नेक्स्ट मते को द यूनिट ऑफ पावर इज पावर यूनिट कोन कहितली को मते पावर यूनिट मते कुह पावर यूनिट कहा को हमें कहउछ द यूनिट ऑफ पावर इज जूल न्यूटन वाट और ओम का कहबा वेरी गुड दैट इज केते पावर मींस तार वाट रो हमें कनेक्ट करूचे मैम एटा केते पावरबल दैट मींस ए केते पछछ ना केते पावरबल लानछु देखिलु सेते वाट लिखाई दिबो कहउछ ना नहीं सो केते वाट केते वोल्ट एटा हमें सब कोथे कहउछ ना मैम पावर सहित हमें रिलेट करूचे जूल कहले कोन बुझुछ ना मैम एनर्जी सहित जूल कहले कोन बुझुछ ना मैम एनर्जी सहित न्यूटन हेले कोन बुझुछ को मते ना मैम फोर्स सहित न्यूटन हेले कोन ना मैम फोर्स सहित सेमिति ओम कहले कोन बुझुतला ओम ऑलरेडी डिस्कस करि सारिछि यस और नो वेरी गुड चलो मैम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस नेक्स्ट मते को व्हिच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ए जो टोटल टाइप रे हमर लाइट अछि ता भितर सबटु शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें काहा को कहउचे कहिलो सबटु शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को लाइट रो हबो अमंग दिस रेड ब्लू वायलेट और येलो काहा भितर सबटु शॉर्टेस्ट वेवलेंथ काहा रो हबो रेड रो सबटु लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जदि आपण मानको पचारला ना सबटु लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ताहाले आपण माने रेड सेति पय ट्रैफिक लाइट रो रेड लाइट दियंती स्टॉप करिया पय बिकॉज़ बहुत दूर रो लोक माने ताकर स्पीड कंट्रोल करके आस परिबे राइट और नो यस मैम सो राइट आंसर कोन हबो सी वायलेट वेरी गुड कहारा ना मैम वायलेट रो so that is the shortest visible wavelength almost हम कहबे 380 nanometer आसी जिवो and guys that is the highest energy among the visible spectrum clear very good चला next मते कुह which type of lens is used to correct the myopia disease कोन ना this is the short sightedness माने पाखरु हमहु जणा जिंजटा देखा जायनी that is the disease कोन होची ना मैम myopia so myopia रे हम को lens को यूज करछु guys बाघ पिला सब कोड गले संडे रे खाइ सोई पड़छंदी
यस राइट आंसर दियो राइट आंसर मते दियो को डिजीज हमें कहूचे तो गोटे एसे के लिखलानी टेक्निकल टीम को पचार गाइस टेक्निकल टीम तुमको इतरे लाइक हेल्प करि परिबे सो राइट आंसर कोन हबो दैट इज द कनकेव लेंस कोन हबो ने मैम कनकेव लेंस यूज्ड इन द मायोपिया दैट मींस मायोपिया करेक्शन करिया पे हमें कोन ना मैम कनकेव लेंस यूज करू छे दैट इज द डाइवर्जिंग लेंस एंड दैट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई क्लियर चलो नेक्स्ट हाँ मते कह देला प्लेन मिरर हमें कोथरे यूज करछे ना नॉर्मल ऑप्टिकल जे कोनोसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रे हमें प्लेन मिरर यूज करछे सिलिंड्रिकल पचाले आपण माने को कहबे ना ऑब्वियसली दैट इज यूज्ड इन द कोन ना मैम हमर जे कोनोसी लाइक हमर इरेगुलर कर्वेचर जेटा कॉर्निया डिजीज आसी जीवो सेइथिरे हमें यूज करछे कोन ना सिलिंड्रिकल ओके नेक्स्ट मते को व्हिच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द हाइड्रोलिक ब्रेक्स रे हमर ओटे प्रिंसिपल यूज हुए क्वेश्चन गायत्री 150 टा अछि 150 क्वेश्चंस आजि अछि लाइक एते की थरो हे की जीवो भाबी के रखो साइंस रो जेति की चैप्टर अछि तमे माने 70% एबव आजि कवर ऑफ करिवो एटा माइंड रे रखि था मते को व्हिच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द हाइड्रोलिक ब्रेक्स दैट इज व्हाट दैट इज मैम पास्कल्स लॉ कोन हबो दैट इज द पास्कल्स लॉ दैट द पास्कल लॉ अकॉर्डिंग हमें कोन कहूचे ए जो हाइड्रोलिक ब्रेक दैट मींस एटा कोठी यूज होची ना द जेतेबेले प्रेशर अप्लाइड हुए when a pressure applied on the enclosed fluid is transmitted equally in all directions that is the Pascal law says and hame koi pariba amar kono the basis of the brakes je kono si brakes hela even hydraulic lifts re hela jacks re hela e sabu thre amar kono na ma'am Pascal law use hoch clear मु कोन एते खरा मु सब दिन सुंदर देखा जाय आज तुमको देखा गली बाकी बच्चा नाम पिला मु सब दिन सुंदर देखा जाय हैला चलो सो बर्नौलीज थ्योरम को आपण माने कोन मन रखछन मते कुओ बर्नौलीज थ्योरम अकॉर्डिंग आपण माने कोन मन रख परिबे दैट द रिलेट्स द प्रेशर एंड द वेलोसिटी इन द फ्लूइड जेतेबेले प्रेशर एंड वेलोसिटी इन द फ्लूइड हमें कंसीडर करूछे सेटा को आपण माने कहिबे दैट इज द बर्नौलीज थ्योरम यस और नो यस जेतेबेले एयरप्लेन लिफ्ट होची जेतेबेले लिफ्टिंग ऑफ एयर फ्लो ने आपण माने मन रखंतु लिफ्टिंग ऑफ एयरप्लेन that is the perfect example of the Bernoulli's theorem eta मन रख पारुचो very good चलो न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी त माने जानछो तीनटा जाक न्यूटन्स लॉ जानछो दरकार नै आर्किमिडीज प्रिंसिपल that is related to the buoyancy what is that now the object of the fluid experience the upward force equal to the weight of displacement of the fluid that means आपण माने नै परिबे the ships हला submarines हला जेते बेले फ्लोट करे केमिति ना ships and submarines जेते बेले ships and submarines हमर केमिति फ्लोट करे पानी ऊपर ड्यूरिंग दिस buoyancy of buoyancy के हमें कौन कहूचे buoyancy को कौन कहूचे ना मैम दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल यस और नो एयर लिफ्ट कहिले ताको को थ्योरम सहित रिलेट करबो बर्नौलीज थ्योरम सहित रिलेट करबो देन जदी आपन को शिपिंग एंड हम सबमराइन कथा कहला ताको कहा सहित रिलेट करबो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सहित रिलेट करबो एटा एग्जांपल सहित आपन मानको एग्जाम रे पकोची लेखि के रखो आज द डेट एंड टाइम सो पास्कल लॉ को अपन माने रिलेट करिवे दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक ओके चलो साउंड वेव्स आर मते को साउंड वेव्स आर व्हाट साउंड वेव्स कथा मते को साउंड वेव्स आर longitudinal transverse electromagnetic or radioactive कौन हबो राइट आंसर को राइट आंसर कौन हबो को मते वेरी गुड द साउंड वेव्स आर ऑलवेज longitudinal जेमिति के हम कोन कहू छै दैट इज द पार्ट हमर कोन the particle when vibrate is parallel to the wave propagation सेते बेला हमर कोन हुए जेते बेला आपण मन रखंतु फॉर एग्जांपल आपण कहबी द कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इन एयर जेते बेले आपण जे कोन सोडे स्प्रिंग को आई डोंट हैव नथिंग ओटोटे देखैबा पय किछि नाही अदरवाइज देखो त मटे स्प्रिंग को तबले टाणी की छाडी दियो से किछि टाइम जे वाइब्रेट करे ना नहीं तो दैट इज व्हाट दैट इज द पार्टिकल वाइब्रेट करे हमर ता भितरे आपण माने एग्जाम रे देखिबे तो कोन कहिबा द साउंड इन द एयर हेला वाटर हेला साउंड इन द एयर लेवल हेला साउंड इन द वाटर लेवल हेला साउंड इन द सॉलिड लेवल हेला से माने लॉन्गिट्यूडिनली ही कोन पास करंती ट्रांसवर्स हेले कोन हबो ना ट्रांसवर्स ता गाइस हमर परपेंडिकुलर हे हिसिबो यस और नो यस मैम जेमति कि लाइट वेव्स रे आसिला वाटर सरफेस रे जो वेव हमर आसुची दैट इज द ट्रांसवर्स वेव
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहले कोन बुझुछो ना दैट इंक्लूड्स द लाइट रेडियो एक्सरेज राइट लाइट रेडियो एक्सरेज हेले हम ताको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहूची व्हाट्स अबाउट द रेडियो एक्टिव वेव मते कहि परिबो द रेडियो एक्टिव रेज आर द अल्फा बीटा गामा सिंपली मन रखो अल्फा बीटा एंड गामा क्लियर चलो नेक्स्ट मते को व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट Which instrument is used to measure electric current मते कहिलो कहा को कहजे एबे कहतिली इलेक्ट्रिक करंट हेले कोन मन रखिबो ना मैम एमीटर कहा को एम्पियर मेजर कोथरे हुए एम्पियर रे मेजर हुए जदी को यूनिट पछरिला ताखाले कोन रखिबो एम्पियर जदी इलेक्ट्रिक करंट हमर कोन मेजर कोथरे हुए इंस्ट्रूमेंट पछरला ताहाले आपण माने कोन कहबे ना एमीटर yes or no and it always connect हुए in a series not a parallel it is a series method एटा मन रखता in a low resistance okay and your symbol कोन गाइस ना ammeter a clear voltmeter कोन कहितली that is हमर एटा series रे जाए ammeter हमर series वे रे लागे but हमर voltmeter के केते हुए ना मैम parallel ये parallel रे रहे clear very good potential difference मापे पे हमें कोन ना मैम voltmeter very good सूर्य voltmeter हमें कोथि पे पोटेंशियल डिफरेंस पे यूज करछ galvanometer व्हाट्स अबाउट galvanometer हमें कोथि पे यूज करछ ना द सेंसिटिव डिवाइस फॉर द स्मॉल करेंट्स लाइक हमरा बहुत ही स्मॉल माइनर करेंट जदी फ्लो होची ताको हमें मापुछ कोथि galvanometer रे बेसिक फॉर द कन्वर्जन टू द ammeter और द वोल्टमीटर को कन्वर्जन करबा लागि हमें galvanometer को यूज करछे ohmmeter कहले कोन बुझे ऑब्वियसली तमन जानत मेजर्स फॉर द resistance that is related to the ohm's law clear or no yes next मते को which of the following is not a unit of energy कोटा एनर्जी रो यूनिट नुह ता माने तीनटा थिबो जोटा कि यूनिट होउची एनर्जी रो yes or no yes चलो what will be not guys joule ना नहीं yes ma'am joule भी calorie ना नहीं yes ma'am calorie then मते को watt कोन हबो कि guys watt हमर कहारो ना मैम watt ही हबोनी ये ता हमर पावर रो यूनिट watt हमर पावर रो यूनिट then ये केमिति हबो so used in the food energy हमें कहि परिबा that is what used in the food energy sorry हमरा food energy कोचे हमरा normally कोथरे energy unit नहीं sorry that is हमें often taken as a mistakenly हमें taken करूचे as a unit of what ना मैम energy but आकु आपण माने केबे consider करिवे and exam रे बहुत थरा एई सेम क्वेश्चन हमरा एसएससी रे पढीची एई सेम क्वेश्चन रेलवे रे भी आसीची आपण माने जाई कि चेक करि परबे PYQs and पिला माने कंफ्यूज होंती because all are the like लागे कि हमर एटा थिबो बोली but एटा नुह एक्जेक्टली पिला माने org मारि दे के आसंती this is org is the CGL unit of energy एटा माने रखो ये हमर CGL unit of energy एठी आपण को यूनिट पचारिसी आपण को CGL की SI यूनिट पचारि नाही yes ना नहीं ये CGL कोन कहूची रे CGS ओके हां CGS चलो next mate ko which radiation has the highest penetrating power ko jaldi which radiation has the highest penetrating power kahara कहउतले alpha beta gamma और infrared कहा सहित रिलेट करिबा अल्फा सहित करिबानी अल्फा को पचारले आपण माने कोन कहबे that is the lowest penetrating power जहार थाई that is the alpha yes or no very good आमे कहि परिबा कार बीटा very high speed electron आमे ताकू कोन कंसीडर करछे as a electron so याकू माने रखो this is a high speed electron okay रहिला किए ना मैम गामा की हबो ना मैम gamma okay that is the electromagnetic radiation and that is the highest penetrating requires करे कोन that is the thick lead require करे to penetrate or to concentrate the shielding infrared कोन हबो ना मैम infrared तो हबो बिल्कुल भी कारण हमें जानचे infrared is a non iodizing radiation infrared is the only non ionizing radiation guys speed होची कि मते कहिले मु स्लो करिवे जदि स्पीड होची मते कहिबो कि मैम टिके स्लो जिबा नेक्स्ट मते को द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली अच्छा एस्केप वेलोसिटी हमर अर्थ रो केते होची मते कहिलो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अच्छा काना ओके कोन हबो ठीक अछि संग मित्रा ओके सुप्रिया राइट आंसर कौन होगा that is the 11.2 kilometer per second कौन the minimum speed needed to leave the earth's gravitational fluid
ग्रेविटेशनल फील्ड को हमर लिफ्ट करिबा लागि छाड़ीबा लागि जो मिनिमम स्पीड हमर रिक्वायर हुए दैट इज द 11.2 मीटर पर सेकंड एटा मन रखो विदाउट द propulsion एटा मन रखो दैट इज विदाउट propulsion माने पडुची मंगलयान मिशन मॉम मिशन कौन हेतिला ना मैम आउट ऑफ ऑर्बिट जाई की कोठी की ना मैम जीओ को जाई की हमर तो आराम से कोठू एलियो रो आराम से आपण माने पळेबे सो ए लो अर्थ ऑर्बिट रु जिबा पय हमर 11.2 मीटर पर सॉरी किलोमीटर पर सेकंड स्पीड जिबा निहाती दरकार आफ्टर दैट जीओ को जोला परे आपण माने कोन ना मैम प्रोपेलेंट यूज करि पारिबे ता पर्यंत आपण विदाउट प्रोपेलेंट रे आराम से जाई परिबे क्लियर मैम मोटिवेटेड मझरे मझरे करंतु मु पूरा डिप्रेशन में अछि काई कोन हला भाई तमरो ए टाइम रे माने तम मानकर मोटिवेशन पीक रे रहिबा कथा दरकार भी नाही तमानु के मोटिवेट करिबा कथा कारण पिला एज अ स्टूडेंट मु जब भी स्टूडेंट थिली मु जानि छे तो एग्जाम टाइम पाखो को आसे किछि मोटिवेशन रिक्वायरमेंट ही होइनी कारण एग्जाम डेट ही देखा जाय सिलेबस केति की कंप्लीट करि छी केति की रिवीजन करि छी ओनली आखि आगे सेइडा अपन मानकर चारियाडे बाउंस होथुबो कि अच्छा मैथ कवर करनी रीजनिंग करिनी जीके करिनी ओडिया करिनी इंग्लिश करनी एगुडा तो माइंड आसुथुबो देन अपन मानकर डिप्रेशन से को टाइम केते बेडा आसुची धन्य तम माने डिप्रेशन हे पय टाइम भी होची तम मानकू टाइम नहीं बाहर डिप्रेशन रू चलो नेक्स्ट मत देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें कहा को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहू छी कुआ मते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रबर हेले कोन हबो फर्स्ट थिंग को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने आपण माने कोन बुझुचंती गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मींस कोन दैट इज एक्सीलेंट माने हमें कहि परिबा दैट इज अ एक्सीलेंट कंडक्टर हेथिबो आफ्टर हमें कोन कहि परिबा जेते बेले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूथबो ताकू से कोन ना मैम सपोर्ट करू नथिबो देन हमें कोन कहिबा सॉरी सपोर्ट करूथबो तो कहउथबा कोन रबर रे करले कोन ए हबो की गोटे गुड कंडक्टर ना ना द बैड कंडक्टर प्लास्टिक विद द बैड कंडक्टर वुड इज इन द बैड कंडक्टर सो हमें जदी कंसीडर करिबा कहा परे ना फर्स्ट की हबो गुड कंडक्टर ना मैम सिल्वर हबो हमर फास्ट गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर दैट कहा को हमें कंसीडर करछ ना मैम कॉपर को देखो एठी कॉपर अछि जदी सेम ऑप्शन ने अपन मानकर सिल्वर भी थांता सेम ऑप्शन ने अपन मानकर सिल्वर थांता अपन माने संगे संग कहते मैम तो कॉपर पढी छन हमें कॉपर मार गेसिबु गाइस कॉपर थु आगो सिल्वर क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते देखो Next, which of the following uses the principle of the total internal reflection? Total internal reflection, the TIR. तार principle according कोटा हमर हेछि माइक्रोस्कोप हमर total internal reflection ने माइक्रोस्कोप हेछि की ऑप्टिकल फाइबर हेछि पेरिस्कोप हेछि और टेलीस्कोप हेछि कोटा हेछि मते को राइट आंसर जल्दी very good that is the optical fiber kon habo that is optical fiber that is work on the total internal reflection mane rahibo the use in the medical like amara medicine endoscopy internet या फिर communication सब थिरे हमर एटा रिक्वायरमेंट हुई yes or no yes guys चलो माइक्रोस्कोप कहले अपन माने को थ्योरी अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोप मन रखचन ते कहले सेमिधि ही लागे ओके माइक्रोस्कोप कहले कोन कहछ ना ओनली से लेंस यूज करूची टू मैग्निफाई माइक्रोस्कोप रे ओनली लेंस ही यूज होची अलगा किछि लेंस माने यूज नाही देन को पेरिस्कोप कहले अपन माने कोन बुझुचंती ना पेरिस्कोप रे हमर प्लेन मिरर यूज होची कोन ना मैम प्लेन मिरर यूज होची टेलीस्कोप कहले सेम टेलीस्कोप कहले कोन बुझुचो ना मैम टेलीस्कोप हेले दैट इज यूज द लेंसेस एंड मिरर्स बोथ टू व्यू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर चलो नेक्स्ट मते को the bending of light when it passes from one medium to another अच्छा light हमरा bend down हे जाय जते बेले कोन ना पास करे from one medium to another medium सेटा केते बेले हुए कोठी ना रिफ्लेक्शन तक हमें कहूचे रिफ्रैक्शन कहूचे डिफ्रैक्शन कहूचे या फिर डिस्पर्शन कहूचे कोन हबो दिस इज अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जेति के हमरा क्लास रे भी 150 अच्छा प्रेजेंट सेइथरो 120 पिला ए भीतर कंफ्यूज हे जानती कि व्हाट इज एग्जैक्टली दैट What is exactly that? Guys, reflection माने कोन ता जेते बेले लाइट बाउंस बैक करिवो रिफ्लेक्शन माने कोन हमें कहू छ ना मिरर टे देखैले हमर लाइट ता बाउंस हे जाउची दैट इज द रिफ्लेक्शन जेते बेले लाइट बाउंस बैक करे इनटू द सेम मीडियम दैट इज द रिफ्लेक्शन एटा मन रखो एंड व्हाट इज दैट ता जेते बेले लाइट बेंड हे जाय ताको हमें कोन कहू छ ना मैम दैट इज द रिफ्रैक्शन कोन कहू छ ना रिफ्रैक्शन कहू छ द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज इन द
speed across the mediums. Yes or no? Yes ma'am. Example आपण माने नहीं परिबे the pencil in water कोन जेबे हमर पानी भितरे पेंसिल को पुरोछे फॉर एग्जांपल बॉटल नहीं देखे भी केमती तो पानी भितर जते बेले हमें बॉटल को सॉरी पेंसिल को पुरोछे सेटा आपण मानु कोन ना मैम टिके बेंड हेथिबार देखा जिवो दैट इज ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट और द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन मैम clear very good so इथे यूज हुए कोन ना बेसिस ऑफ लेंस प्रिज्म्स एंड स्पेक्टेकल्स अकॉर्डिंग हमें जानि परिबा डिफ्रैक्शन कोन कहूची गाइस मत बुआ व्हाट इज डिफ्रैक्शन हाजी +3 फिजिक्स क्लास मने पड़ी जाउची अरे वाह सेटा रिवीजन हेबा दरकार त माने कर so the bending of light around the corners or the edges हमें ता कहूची डिफ्रैक्शन for example आपण माने डिफ्रैक्शन नै परिबे the spreading of waves through a narrow slit कोन हबो the spreading of a wave through a narrow slit that मान कहूची डिफ्रैक्शन yes ना नहीं प्रिज्म रे डिफ्रैक्शन हुए वेरी गुड मौसुमी तो डिस्पर्सन कोठी हुए ताले डिस्पर्सन कोठी हुए मते को दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into 7 colors जोटा की प्रिज्म रे हुए जोटा की कोथि रे ना प्रिज्म रे हुए ठीक अछि मौसुमी डिस्पर्सन कोठी हुए हां प्रिज्म रे डिस्पर्सन हमर हुए राइट कहले डिफ्रैक्शन हुए किछि भी चलो so which of the following is the renewable energy sources which of the following मैम ऑल ऑप्शन नो डेफिनेशन गुडा बैक रे रखंदु सांग भलिया गाइस सर तांको स्टाइल ले पढांती मु मो स्टाइल ले पढाए तो केही का स्टाइल को कॉपी करि परिबेनी ठीक अछि चलो चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पेट्रोलियम नेचुरल गैस विंड और कोल ताल त माने क्लास काई करियो मते को मु त माने एठी पढाई देली त माने क्लास आसे कोन दका त माने तो जानि देला कि मैडम तो नेक्स्ट पेज रे तार रखिचंती आंसर शीट हमें तो पीडीएफ फाइल ले पढी देबो सो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स तो क्लास भी आसीबेनी से माने वेल एक्सप्लेन डिस्कस करा हुए कोथि पई मते को मु जे तुमको नोट्स ही प्रोवाइड कर देबे त माने स्कूल हबो 10 टा टाइम हबो स्कूल आसीबो तुमको हम नोट धरै देबो तमे स्कूल रे पढिबो स्कूल टाइम कथा कहूची ताहले पढ़ा होउतला कोन पे तमे हमको लिखि देबो हम तुमको नोट्स कॉपी करके बांटी दो प्रिंट करके त माने घर को पढिबो पाठ पढिबो एमिति हुए कि हुए नि ना सो मोस्ट स्टाइल भाई एटा चलो सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कोटा एनर्जी सोर्सेस हबो यस पेट्रोलियम कौन हबो दैट इज द फॉसिल फ्यूल दैट इज नॉन रिन्यूएबल यस very good then kon habo na ma'am which of the following is a renewable energy sources that means that can be renewed toda ki renew hei paribo that is the renewable that means the wind yes or no wind clear baki e sab amar kon na non renewable category re jibe next mate ko which planet is known as the morning star acha morning star ebe ko dina gote मझिरे आपनकर चंदन सर साइंस रे क्लास नोतले आपन माने को बुझोतले मॉर्निंग स्टार कहा को कहसे ह ना नहीं को मते दैट इज विनस का को जाउतला ना मैम विनस को जाउतला मॉर्निंग स्टार एंड जदि आपन को इवनिंग स्टार भी पचाला कंफ्यूज हेबे नै इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार बोथ हो हमर के ना विनस कोन रहिबो हम जदि पचारा गला अर्थ रो ट्विनिंग साइज रे अर्थ रो ट्विन किए ना गाइस ए वेनस दैट इज द वेनस इज आल्सो अर्थ रो twin in the size and the mass according mone rakho size and mass according earth ro twinning rahuchi as twinning rahuchi venus mone rahibati ki mars ko ame kon कहूचे ना मैम जदी रेड प्लैनेट पचारिला जदी कोन पचारिला ना मैम रेड प्लैनेट पचारिला ताहले हमें कहबो दैट इज द मास जदी मर्क्यूरी कोन कहूचे ना जदी क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन जोटा सबटू सन रो कोटा क्लोजेस्ट रहूची क्लोजेस्ट रहिबो हमर किए ना सन रो दैट इज द मर्क्यूरी व्हाट्स अबाउट जुपिटर टेल मी व्हाट्स अबाउट द जुपिटर दैट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट कोन ताको हमें जायंट प्लैनेट कहूचे दैट इज द जायंट प्लैनेट दैट इज लार्जेस्ट वन क्लियर yes or no next ba अच्छा 25 क्वेश्चन है गला गाइस अगेन फॉर यू 3499 होची महापैत्र प्राइस वैलिडिटी 1.5 ईयर इंडिया भीतर आपनकर उत्कर्ष बैच पीओ बैच भी जाउची जो माने भी चैनल को सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करंतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करी कि गोटे डेमो क्लास सब टीचर मानकर फ्री प्रोवाइड करा जायची थ्योरी केमिति आपन को पढ़ा जाउची केति रूट लेवल लु जस्ट वंस गो एंड विजिट ओके चलो
नेक्स्ट सेम थिंग हमर रहउची वेदांत टीचिंग रो वैलिडिटी 1 ईयर रहउची एंड ता भीतर पीसीएम सीबीजेड एंड आर्ट्स रो आपनकर कंपाइल हो जाउची द प्राइस इज जस्ट 1499 ओनली नेक्स्ट मते को व्हिच इज द लाइटेस्ट गैस फिजिक्स थिला सेते की एबे आसो टिके केमिस्ट्री को ओके बैक पे रखंतु ऑप्शंस रा टाइमिंग को मते व्हिच इज द लाइटेस्ट गैस गैस हमें कहा कोची के माने बलून भीतर पुरे के ऊपर को छाडी दिया होची हां ना नहीं सो लाइटेस्ट कहा को कहूचे लाइटेस्ट गैस फास्ट सेटा माने रखनी लाइटेस्ट गैस हमें जानी छे हीलियम यस लाइटेस्ट गैस हमें जानी छे हीलियम बट लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एटा हमन को गैस पछारी छी ना हां लाइटेस्ट गैस जे तू पछारी छी आपण माने हीलियम रे जानतु पर जदी आपण को लाइटेस्ट अगेन कहूचे टिके केयरफुली मो कथा गाइस सुनिबो चगलामी नाही अभद्रामी नाही मो कथा टिके सुनिबो जदी आपण माने को पछारा गला द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट ताहाले आपण माने कोन चूज करिवे ना हाइड्रोजन दिस इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड मस्ट से कहिबी जो माने साइंस बैकग्राउंड रो पिला से माने टिके त माने को डिफिकल्ट बिल्कुल हबनी इजी हबो टिके पीरियोडिक टेबल टा को मन रखि दियो यस और नो वेरी गुड एंड ए हाइड्रोजन जदी आपण पछारला दिस इज द हाईली फ्लेमेबल गैस गाइस दैट इज याकु भी हमर कोन ना ये नहीं हमर हीलियम रे कोन चूज हुए ना मैम बलून रे हमर हीलियम यूज हुए ओके नेक्स्ट चला मते कहिबो व्हिच एसिड इज फाउंड इन लेमन अच्छा लेमन रे को एसिड हमर अछि मते को लेमन रे हमर को एसिड हमें पाउछे एसिटिक एसिड कोठी पाउछे ना मैम एसिटिक एसिड आपनकर विनेगर रे मिले कोठी ना मैम विनेगर रे हमें एसिटिक एसिड पाए हां ना नहीं टेल मी यस और नो सो लेमन रे कोन पाउछे द साइट्रिक एसिड सो जेते हमर ऑरेंज अछि लेमन अछि सेई टाइप रो फ्रूट एंड आपन मानन को मोस्ट इंपोर्टेंटली कहिबी ए जो साइट्रिक एसिड हमर अछि साइट्रिक एसिड प्लेंटिली आपन माने साइट्रिक एसिड नाही देखो साइट्रिक एसिड आपन मन रखंतु कोन ना लेमन एंड आपन मानन जदी पता गला विटामिन सी कोठी अधिक अछि ताहाले आपन कोन कहउसंती विटामिन सी जदी आपन मानन कहिले ताहाले आपन माने कहा सहित रिलेटेड करछ मते को हाईली प्रेजेंट अछि विटामिन सी कोठी कहा सहित रिलेट करूछ टेल मी यस चंद्रशेखर दैट इज द गुआवा कोन साइट्रिक एसिड जोटा हमर सी हमें कहउछे ना सेटा हमर प्रेजेंट अछि कोठी ना गुआवा रे नॉट इन ऑरेंज सतीश एक्जेक्टली हमर गुआवा रे अछि सो ताको टिके माइंड रे रखिथिबो हैला कारण आपण मानन को कंफ्यूज करबा लागि लेमन भी ऑप्शन में थिबो ऑरेंज भी थिबो गुआवा भी थिबो और समहाउ किवी और एनीथिंग किछि फ्रूट थिबो पिला माने लेमन देखि कि कंफ्यूज हेगी पड़ांती बट गुआवा सहित छिबो हैला चल यस तो लैक्टिक एसिड सहित हम रिलेट करछ कहा सहित लैक्टिक एसिड मैम हमर मिल्क रे प्रेजेंट रहउची कोन ना मिल्क रे लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहउची ऑक्सैलिक एसिड हमें कोन कहउचे ना टमाटोज स्पिनाक राइट टमाटोज स्पिनाक एथरा में कोन पाउचे ना ऑक्सैलिक एसिड तो स्पिनाक खाइबा स्टार्ट करि दियो टमाटो सब खाउछ ना नहीं टमाटोज खाउछ ना नहीं टमाटो आपनकर स्किन को पूरा यंग रखे यूथफुलनेस रखे गोटे रिजुविनेट करे सो डेली टमाटो खाओ आहा टमाटर बड़े मजेदार ओके चलो सो कॉमन सॉल्ट इज केमिकली नोन एज कॉमन सॉल्ट को हमें कौन कहउछे मते कुआ कॉमन सॉल्ट इज केमिकली नोन एज व्हाट दैट इज सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड अच्छा बाइकार्बोनेट नहीं सोडियम क्लोराइड और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और दैट इज द मैग्नीशियम सल्फेट ऑप्शन वेरी गुड दैट इज द सोडियम क्लोराइड कौन हबो सोडियम क्लोराइड इज नोन एज द NaCl कॉमन टेबल सॉल्ट बोली हम ताको कहउचे दैट इज एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी हमर नर्व फंक्शन हैला हमर कोन ऑस्मोटिक बैलेंस हबा दरकार बॉडी भीतरे दैट्स इंपोर्टेंट एंड हमर सॉल्ट सतरिके मन पके देला सॉल्ट सत्याग्रह ओडिसा गुठी पळि आसा सॉल्ट सत्याग्रह केबे स्टार्ट हेतिला 1930 मसिया रे मन पडुची सो ता सहित मन रखि थाओ ओके गांधी जी का सहित मन रखि कि सॉल्ट सत्याग्रह को मन रखि थाओ चला सोडियम क्लोराइड कहले कोन बुझिछ वेरी गुड मने अछि ताले ना कि सडन जदी साइंस रो मन को हिस्ट्री जीके आरो नै जेबी ताहाले त माने कहि परिबो अच्छा पिलाडा हमर पूरा अलगा लेवल ले अछंदी आ ग्रेट सो सोडियम कार्बोनेट कॉल कहिले ना मैम सोडियम कार्बोनेट कहिले हमें Na2CO3 को बुझोचे एंड ताको हमें कोन ना मैम Na2CO3 के हमें कोन से कंसीडर कोचे ना एज अ वॉशिंग सोडा कोथरे ना मैम वॉशिंग सोडा रे हमें ताको ऐड करूछे ओके अल्वोटो ऑलमोस्ट
150 क्वेश्चंस अच्छी एंड यू आर टिल 28 नंबर रे अच्छा काई एमती होच क्या करिस बच्चा पाटी हां साइंस क्लास ये शक्ति साइंस क्लास सो पोटेशियम क्लोराइड सहित का को रिलेट करिवो मते को पोटेशियम क्लोराइड हमर फर्टिलाइजर भाबरे यूज हुए मेडिसिन से भी यूज हुए बट मोस्टली फर्टिलाइजर सहित को रिलेट करके मन रखा कोथरे फर्टिलाइजर्स रे मेडिसिन्स रे याकू यूज करंती देन कोन मैग्नीशियम सल्फेट हमें कहा से रिलेट करूचे ना मैम द एस्पॉन सॉल्ट कोन द मेडिसिन एटा यूज हुए लाइक हमर बाथ सॉल्ट भाबरे भी हम ताको यूज करूचे जो पेडिक्योर करूचे जो पेडिक्योर आपण माने पार्लर जाई केबे देखिथिबे जदी करि भी नथिबे देखिथिबे ना सो ताको हमें मैग्नीशियम सल्फेट को यूज करूचे सो याकू माने रखो यूज्ड इन व्हाट ना मैम द बाथ सॉल्ट भाबरे याकू हम यूज करूचे okay चलो next question answer the which gas is used in the preparation of soda water रे preparation में को gas यूज हुए अमित पेडिक्योर कौन पार्लर जाई पचारा very good yeah that is कौन मैम कार्बन डाइऑक्साइड what that is the carbon dioxide yes एंटोलिना काई हसिला अरे यूनिसेक्स पार्लर भी अच्छी ना तो जाओ विसेज अच्छी जेनिक्स हमारे कौन ग्रीन ट्रेंड्स अच्छी केते सारा अच्छी जाओ सो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाज हमारा डिसॉल्व हे कि रुहे अंडर द प्रेशर हमें कहि परिबा कोठी ना वाटर रे सो सोडा वाटर रे कोल्ड ड्रिंक्स रे हमारा कोन यूज हुए ना मैम कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज हुए क्लियर सो दैट कॉजेस द फीज इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स रे गोटे आसे ना क्रिस्पीनेस आसे सेति पई हमें ते चाउर सहित डाइट को दिन को 2-3 टा पी दोचे सो सेटा कोथि पई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड ओके चलो हाइड्रोजन ताको मन रखो दिस इज द हाईली फ्लेमेबल एग्जाम रे पडिबो व्हिच गैस इज कंसीडर्ड एज द हाईली फ्लेमेबल गैस दैट इज द हाइड्रोजन एटा मन रख परिबो ना नहीं यस क्या चलो हमर मन रखो नाइट्रोजन कोथि यूज हुए नाइट्रोजन मे भी तो मन आगुर जानिथिबो और स्टिल नॉट श्रीकांत मैम स्टार्टिंग रो क्लास जॉइन करछि बट कमेंट ऑप्शन ने आसुनी डिस्प्ले रे काहे कि तम मेसेज आसुची कमेंट काहे आसुनी सब आसुची डोंट वरी ए जो नाइट्रोजन आपण माने जानि सते हम जो कुरकुरे लेस हमर कोन पैकिंग होची चिप्स पैकिंग ऑफ चिप्स रे हमर किछि गैस तो यूज करथबे ना सो दैट सेट हमर कोन जेते दिन जे एयर रहउची सेते दिन से क्रिस्पी हेगी रहउची सो एटा हमर एक नाइट्रोजन गैस यूज करा जाय नाइट्रोजन गैस यूज करा जाय टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हेले तमर कोन सिपि जीव सो प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन हमर नाइट्रोजन गैस सेतरे कोन एंट्री करा जाय जानिथिलो एटा गुरु जानिथिलो हां के जानिथिबे ना कि चलो which metal is liquid at room temperature हमर लिक्विड को मेटल रहे टिके कहिलो which metal is liquid at room temperature कहा कहूचे यस आपण मानकर मोर समस्तिकर फेवरेट की ना मर्क्यूरी हम नहीं mercury so only metal that present in the liquid at the room temperature that used in the thermometer yes or no even in the barometer also barometer हमर कोन नाम mercury यूज करा जाय तार सिंबल कोन को mercury रा सिंबल टिके लिखितला गाइस mercury रा सिंबल टिके लिखि दियो that is the Hg and that is considered as the alkali metal yes or no yes guys so same हमें सोडियम को कोन जानि सोडियम त हमर सॉलिड है रूम टेंपरेचर रे that is very soft and हम दा कहै highly reactive alkali metal yes or no lead हेले कोन कहै that is heavy metal हमें कंसीडर कहै lead को that is solid in the room temperature also that is used in the कोथरे ने मैम बैटरीज रे हम ताको यूज करू छी yes or no yes तो pb yes solid is lead है pb very good next में देखो aluminium का मैं कौन कंसीडर करते that is the solid and the light metal and used in the utensils हमर कोन even the packaging like foil packaging रे हम जो silver foil रे खाइबा आनुचे that is the aluminium foil okay चल next में देखो roasting of iron कहले कोन बुझुचो जाओ चलो तुम मान ज्ञान भंडार देखिकी मो भले अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्ति कर दोछि जा हो चलो so roasting of iron हमें कहा खोजे the oxidation method is nothing but the roasting of iron yes or no yes ma'am so iron
plus oxygen plus moisture जेतबे आसी जाए that is what ना मैम roasting and roasting रो chemical formula कोन ना Fe2O3 Fe2O3HOX एति की मन रखिबो ओके X का ऐड करिवो सीधा Fe2O3 आसी जिवो देन H2O को ऐड कर दियो वाटर भी रहिबा दरकार ना वाटर भी रहिबा दरकार ना कारण आयरन ता सहित ऑक्सीजन ता सहित मॉइस्चर मॉइस्चर मींस कोन वाटर ही मैम आज 10टा टाइम क्लास ऑफ रहिबो की हां कोन तमान को कहबी तो ए क्लास ता आपनकर 11टा जे एक्सटेंड हबो ए क्लास ता आपन मानकर 7टा रु 11टा अछि मैराथन सेटा आपन मान जानि पाउनांती हो चलो नेक्स्ट अच्छा कोन ऑप्शन अछि देखि देबा रिडक्शन अच्छा मते कहलो रिडक्शन माने कोन बुझुचो मते को व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन ना द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आइदर आपन माने बुझी परिबे रिमूवल ऑफ oxygen or that is the gain of electron दीटा देखबे हमें कोन बुझी ना रिडक्शन सेम जदी sublimation कहले कोन बुझुचो sublimation गाइस कहले कोन बुझुचो ना that is the direct solid ru gas conversion हुए that means liquid phase ता माने solid थिबो solid ru direct से कोन ना मैम गैस हे जिवो माने लिक्विड स्टेट ता हमर कोन एठी मिसिंग थिबो दैट इज द सब्लिमेशन मने रहिबो एति की मने रहिबो व्हाट इज डिस्टिलेशन गाइस द सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट्स जेते हम कहउचे लिक्विड को हम सेपरेट करूचे कोठी ना बाय द बॉइलिंग पॉइंट्स दैट इज एग्जांपल अपन नै परिबे अल्कोहल जदी मिसी की थिबो वाटर रे ताहाले कोन हबो अल्कोहल फ्रॉम वाटर हम ताकू सेपरेट करूचे दैट इज द डिस्टिलेशन सो अल्कोहल फ्रॉम वाटर मन रखि था क्लियर डिस्टिलेशन नेक्स्ट चलो द पीएच ऑफ प्योर वाटर पीएच हमें कितने कंसीडर करूछे स्वप्नेश्वर वेरी गुड गाइस वेरी गुड शिट व्हाट हैपेंड या so the pH of pure water obviously हमें 7 को कंसीडर करूछे एंड 7 रो को 7 रो ऊपर को गले हमें कोन कहूचे नेचुरली हमरा माने न्यूट्रली कहूचे 25 डिग्री सेल्सियस रहूची एंड 7 रो कहूचे मते को 7 रहूची देन 7 रो ऊपर को गले कोन होची ना मैम एसिडिक 7 रो तळु को आसले कोन होची ना मैम बेसिक यस और नो उल्टा कहि देली की उल्टा कहि देली ना कोन ना तो बफरिंग होनी टॉक थी मोर कोन घुरिस ना तो हां हां उल्टा कहि देली रिवर्स तक दिए करा बेसिक एंड एसिडिक या दैट इज बेसिक एंड एसिडिक ए रु बी को जिबा पई मु बी रु ए को पळे आसली बट केते पर्यंत ना अप टू 14 एट अप टू -14 ए पर्यंत 7 देन 0 1 2 3 4 देन माइनस क्लियर चलो नेक्स्ट मते को व्हिच गैस इज कॉल्ड एज द लाफिंग गैस इंपोर्टेंट वन लाफिंग गैस बारे कहा को हमें कंसीडर करूछे राइट आंसर that is the N2O that is the nitrous oxide कोन ना मैम that is considered as the nitrous oxide that is the कोन ना लाफिंग गैस बारे हम यूज करछे कार्बन डाइऑक्साइड पचरले आपण माने मन रखिबे ताकू कोन ना मैम ग्रीन हाउस गैस रे क्लियर NO2 that is the toxic brown gas बारे हम कंसीडर करछे जेटा कि एयर पोल्यूशन आपण को करूची एयर पोल्यूशन करछे दैट NO2 N2O and NO2 भीतर नेवर गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट क्लियर वेरी गुड चलो एंड जदि आपन पछरा गेला सल्फ्यूरिक एसिड गाइस हमर एसिड रेन करूची ये हमर एसिड रेन करूची ये हमर फोटोकेमिकल स्मॉग जानिथिबो दिल्ली रे बहुत हुए फोटोकेमिकल स्मॉग सी हमर की क्रिएट करूची ना मैम ड्यू टू दिस NO2 क्लियर द टॉक्सिक ब्राउन गैस एयर पोल्यूटेंट रो कॉज नेक्स्ट मतलब को व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन द मेकिंग द पेंसिल यूज करियारे हमर को एलिमेंट यूज हुए मते कहिलो व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग अ पेंसिल टेल मी दैट इज मने रखो पेंसिल हमर कोन नै पेंसिल नै ग्राफाइट हमर राइट आंसर ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट ना मैम इलेक्ट्रिसिटी मने रखिता दैट इज अ गुड कंडक्टर एंड एलोट्रोप कार्बन रो एलोट्रोप को हमें कहउछे ग्राफाइट एति के मने रखिबो
पेंसिल रे हमर यूज हुए इलेक्ट्रोड्स रे यूज हुए लुब्रिकेंट्स रे हमें काहा को ना ग्राफाइट को भी यूज करू छे यस और नो एक लॉक करा जाऊ मु कोन एते खराब तमे बहुत भलो चलो सो चारकोल को हम कोन कहू छे दिस इज द अमोर्फस कार्बन फ्यूल रे हम यूज करू छे कार्बन ब्लैक को कोन कहू छे दैट इज द पिगमेंट इन द टायर्स रो पिगमेंट को हमें कोन कहू छे दैट इज द कार्बन ब्लैक कलर देन कोल दैट इज द फ्यूल छाड़ो नेक्स्ट को विनेगर कंटेन्स विनेगर कोन कंटेन करे त मानको ऑप्शन वाइज बुझेइतिली मते को विनेगर कोन कंटेन करूची एंटरटेनमेंट हां की बहुत आइडिया तमरा ना कि संडे हेले मने पडथुवा ना चलो सो राइट आंसर कोन होची ना मैम दैट इज द एसिटिक एसिड सी को लॉक किया जाओ वेरी गुड आपन कोन कहितली साइट्रिक एसिड हेले कोन मने रखिबो ना मैम लेमन या फिर ऑरेंज हेले लेमन या फिर ऑरेंज हेले साइट्रिक एसिड मन रखिबो लैक्टिक एसिड हेले कोन ना मैं मिल्क को मन रखिबो फॉर्मिक एसिड हेले कोन मन रखछ कहलो दिस इज इंपोर्टेंट हमर पिंपुडी रो ठंटा रे जो अछि दैट इज द फाउंड इन द एंट रो स्टिंग रे हमर कोन अछि ना मैम दैट इज द इंपोर्टेंट कोन फॉर्मिक एसिड हमर अछि क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट व्हिच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन मते को गैल्वेनाइजेशन कोन एंड को मेटल हमर यूज हुई गैल्वेनाइजेशन रे को व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन ना मैम जते बेले हम गोटे कोन लुहारे कलंकी हेबार जते बेले हम रोकुचे ताको कहूचे गैल्वेनाइजेशन क्लियर सो कहूचे कि कोटिंग द आयरन विथ द जिंक कहा सहित ना जिंक हम जते कोटिंग कर दोचे से प्रिवेंट करूची रस्ट हेबार एग्जांपल अपन नै परिबे द गैल्वेनाइज्ड पाइप्स होना नहीं यस और नो वेरी गुड सतीश भाई चलो ऑलरेडी जानि छ कॉपर हेले कोन कहू छ दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्लियर चलो सो व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस द स्कर्वी को विटामिन डेफिशिएंसी रे हमरा स्कर्वी डिजीज हुए मते कहिलो को विटामिन डेफिशिएंसी रे हमरा स्कर्वी डिजीज हुए मन रखिता विटामिन ए हेले कोन कहू छ that is the night blindness is the vitamin A then हमें कौन कहते हैं vitamin B is the berry vitamin B for berry मन रखिता B टा तो easily मन रहि जाय हो ना नहीं vitamin B टा आपनकर easily मन रहि जाय then कौन होइला ना scurvy is the vitamin C रे हमरा scurvy हुए that means हमरा bleeding of gums आसी जाय weakness आसी जाय that is the scurvy that is source कोठू ना citrus fruits खाइबो आमला खाइबो yes or no very good vitamin D रा deficiency रा कोन हुए ना मैम फेमस rickets yes or no yes मैम चलो rickets रो एक्चुअली rickets रो सिम्पटम कोन कहलो ना हमरा बोन टा सॉफ्ट हे जिवो सो दैट हमें स्ट्रांगली छिडा हे परिबनी छिडा हेले हमें धीरे पड़ी जिबा या फिर हमें वीक हे कि माने एम्ति नस्की जिबा सो दिस इज द rickets ओके चलो नेक्स्ट को द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन atomic number of oxygen hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen so kon hobo that is the 8 so total periodic table समस्त सजेस्ट करबी जते साइंस पिला ताको मन रखिया को बिल्कुल भी डिफिकल्ट हबनी गाइस के periodic table ता मन रखि दा at least 40 नंबर जाय तो मन रखि दियो हैला so carbon हेले कोन कहउछो carbon हेले that is the 6 that is carbon हेला 6 7 हेले तापर कोन मैम नाइट्रोजन क्लियर देन आसी के हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सो 9 नंबर की आसिला ना मैम फ्लोरीन 9 नंबर आसिला फ्लोरीन यस वेरी गुड चलो दैट इज फ्लोरीन को हमें कोन सॉरी ऑक्सीजन को हमें कंसीडर करछे कोन एज अ रेस्पिरेशन ट्रैक सो रेस्पिरेशन में यूज करछे दैट इज द ऑक्सीजन क्लियर चलो नेक्स्ट मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबेल गैस भाबे हमें काहा को फॉलो करूछे अरे वाह 20 टा मन रखियो एते केमदी मन रखिला so which of the following is a noble gas भाबे हमें काहा को कंसीडर करूछे ताहा को ना मैम हीलियम को कंसीडर करूछे एज अ नोबेल गैस मन रहइबो एटा मन रहइबो हीलियम को हमें कंसीडर करछे तार एटॉमिक नंबर केते हीलियम रा एटॉमिक नंबर गाइस हाइड्रोजन helium that is the 2 atomic number yes or no yes guys next iba very good this is inert light and used in the balloons also next which is the hardest naturally occurring substance and that is also hardest natural occurring substance हमें कहा कहूचे आयरन को तो कहिबानी आयरन तो माने जानि छ पूरा हार्ड तो that is the hard metal but हम कोन बचेछि that is the hardest
हार्डेस्ट पचारिछि ताहाले कहा सहित जिवु ना मैम डायमंड सहित जिवु दैट इज द allotrope of carbon आपण मानू पचारिबो व्हिच इज द allotrope of carbon then what will be the answer what will be your answer when your question will be the allotrope of carbon mentioned from the below options okay chalo that is the diamond next मते को which acid is found in the ant string एबे ही कहिथिली which acid is found in the ant string what will be the right answer that is formic acid हो ना नहीं formic acid ना very good that is हमको कोन formic acid ही से हमरा कोन देह भीतर पूरा गेंजी दिए that's why हमर कोन burning आसे itching आसे that is from the ant bite रो आसे acetic acid हेले कोन कहिथिली ना मैम acetic acid हेले vinegar कहिथिले lactic acid हेले milk कहिथिले citric acid हेले कोन कहिथिली ना मैम that is the lemon मन रहिबो next मते कुआ oops next which gas is essential for the photosynthesis very good photosynthesis पाई हमर को gas ता बहुत essential photosynthesis कोन ना मैम due to the presence of sunlight हमर जेबले प्लांट ता प्रिपरेशन करे फूड प्रिपरेशन जेते प्लांट करे ताको हमें कहउछ फोटोसिंथेसिस सो मेन इंपोर्टेंट कोन गैस रहइबो दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमरा एज अ बाय प्रोडक्ट की बाहर जीवो एज अ बाय प्रोडक्ट हमरा ऑक्सीजन बाहर जाय क्लियर एसेंशियल पचारिले कार्बन डाइऑक्साइड बट जदी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नाही बट एसेंशियल भी क्वेश्चन पचारिनी आपण मान को माइंड रे थिबो अच्छा मैडम कहितिले फोटोसिंथेसिस माने छोटरू मन रखिछ कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड बट को गैस यूज हुए जदी को गैस रिलेटेड पछलिबो व्हिच गैस इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड नाही ऑक्सीजन अछि नाइट्रोजन अछि हाइड्रोजन अछि हीलियम अछि कोन मारिबो दैट इज द ऑक्सीजन कारण एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी हमर कोन ना रिलीज हे जाय कोन रख परिबो सो नेक्स्ट चलो कार्बन डाइऑक्साइड दैट टोटल हमर ग्लूकोज केमिति फॉर्म होछि कारण हमर CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कहा प्रेजेंट रे ना मैम वाटर भी रिक्वायर हुए एंड हमको कोन दिए ना मैम से ग्लूकोज दिए व्हाट इज ग्लूकोज ना C6H12 O6 एंड प्लस हमर ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट गाइस बाहर जाए एति के हमर कोन इक्वेशन टा को माने रखिथिबो हो ना नहीं चलो नेक्स्ट एंड हां एटा हमर कोथरे ना गोटे फिक्स्ड क्लोरोफिल भी हमर रुहे द क्लोरोफिल पिगमेंट जोथि पे हमर ग्रीन हमर कोन प्लांट रो लीफ रो कलर हमर ग्रीन थाय दिस इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड हमें कहबा क्लोरोप्लास्ट को कोन कहै ना दैट इज द किचन ऑफ द प्लांट एति के मन रखिबो चलो इट या रही गला स्टक हे गला 10 सेकंड 1 to 10 काउंट करा हे गला चलो Yeah. Which of the following is not an allotrope of carbon? Allotrope of carbon कोटा नुह पचाची डायमंड टा ऑलरेडी तमन पढेची ये allotrope of carbon ग्राफाइट टा पढेची यस मैम फुलेरिन टा भी गोटे हमर कोन allotrope of carbon जहा को हम कोन कहूचे कार्बन रो 60 C60 को हम कहूचे दैट इज द फुलेरिन तो रहिला किए ना मैम क्वार्ट्ज रहिला किए क्वार्ट्ज हां की ऑप्शन नंदिनी ये नंदिनी का आगे की थिला रे पळेले ममता पात्र ममता मारीची ऑप्शन सी ना कि फुलेरिन को हो चलो नेक्स्ट अरे सब टिक मार देछि त माने जानिबो केमती that is quartz next मते को the process of depositing a layer of zinc iron जते बेले आयरन ऊपर गोटे लेयर ऑफ जिंक चढ़ा जाय कोथि पई ना मैम रस्टिंग न लागिया पई त प्रोसेस को कोन कहै जाय एबे ही कहितली दैट इज द galvanization कोन होची ना मैम द प्रोसेस इज कॉल्ड द galvanization yes or no very good then मते कहिलो ए जो alloying कोन alloying माने कोन ना जते बेले मैम alloy हमें कहा कहूचे ना mixed metal that is the mixing मेटल्स को हमें कौन कंसीडर करूची ना मैम एलॉय रे कंसीडर करछे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेले का कंसीडर करछे ना मैम द कोटिंग बाय द इलेक्ट्रोलिसिस जेमिति आपण माने नै परिबे सिल्वर प्लेटिंग कोन ना मैम सिल्वर प्लेटिंग को आपण माने नै परिबे yes then anodizing कोन दिस इज इंपोर्टेंट वन anodizing कोन कहउछ ना द कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम विथ ऑक्साइड coating aluminium with oxide that is guys anodizing मन रहबो एति की very good चलो next मते कुआ LPG mainly contain हमर LPG रे mainly कोन contain रुहे ज्योति मैम बहुत क्वेश्चन अछि तमे सॉल्व करो
तुमको गोटे क्लास रे सबुतिक साइंस नेबार अछि ना नहीं मते कुह गोटे क्लास रे ज्योति सबुतिक साइंस कवर अप करिबार अछि ना नहीं देन दिस क्लास विल बी a booster for your preparation. Next quoi, the LPG mainly contains what? LPG रे हमर mainly very good हां butane and propane ही थाए मैम मिथेन कोथरे थाए ना मैम मिथेन हमर CNG रे अधिक थाए मिथेन हमर कोड CNG रे थाए butane and propane हमर कोथरे यूज है ना the mixture used in the LPG cylinders इथेन कोथरे थाए इथेन आपनकर natural gas acetylene कहले कोन बुझछो ना हमर used in the welding आपण मानकर वेल्डिंग हैला बेले हमें कहा को ना एसिटिलीन को यूज करू छे क्लियर चलो नेक्स्ट मते को द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज हां मिथेन गोबर हाउ चलो नेक्स्ट मते को हमें गोबर गैस हबो सीएनजी भी तमाने चलो नेक्स्ट मते को द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा रा केमिकल नेम कौन कहितली that is the sodium bicarbonate yes or no yes ma'am that is used in the baking is in the as a यूज हमें कोन मेडिसिन ने एंटासिड वाला यूज करू छे जो इनो आपण माने पी दो छथि गैस हे गला टिके इनो पी दियो दैट इज व्हाट दैट इज द बेकिंग सोडा सॉरी दैट इज द yes that is the baking soda okay sodium bicarbonate हम ता कहू छे क्लियर सो सोडियम कार्बोनेट हमें कहा कहू छे ना मैम वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का कहू छे ना मैम ताकू वॉशिंग सोडा को हमें कहू छे पोटेशियम कार्बोनेट हमें कहा कहू छे ना मैम पोटास फर्टिलाइजर भाबरे यूज हुए फर्टिलाइजर पोटास ताकू कहू छे कैल्शियम कार्बोनेट कहले कोन बुझो ना मैम लाइमस्टोन चॉक याको हमें कहू छे लाइमस्टोन चॉक ए सब को आपण माने रिलेट करि परिबे यस और नो हां कि क्लास 7 अछि फिर भी देखो हमर ए लेवल ले आसी पडु छे नेक्स्ट को व्हिच एसिड इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियल मते को ऑयल ऑफ विट्रियल हमें कहा को कहू छे मैम टिके संकेत साइड रे लिखि दियंतु संकेत मन लेख सोडियम बाइकार्बोनेट कोन दैट इज द Na2CO3 ओके नेक्स्ट मते चलो व्हिच एसिड इज कॉल्ड द ऑयल ऑफ विट्रियल हमें कहा को कहू छे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें कहूने दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें जानि छे हमर स्टोमक भीतर अछि दैट इज द गैस्ट्रिक जूस बोले हमें जानि छे गैस्ट्रिक जूस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो राइट आंसर कोन हबो वेरी गुड ऑप्शन बी इज द सल्फ्यूरिक एसिड तार फार्मूला कोन तार संकेत कोन ना H2SO4 तार संकेत कोन रहला ना H2SO4 क्लियर वेरी गुड चलो तार ओल्ड नेम कोन ना ऑयल द विट्रियल जोटा को हमें कोन ना मैम ताको हमें कोन ना अल्केमिस्ट्स बोली जानि छे नाइट्रिक एसिड हमर कोथरे आसे ना aqua fortis रे हमर दरकार हुए देन हमर फास्फोरिक एसिड ऑलरेडी कहै छी फर्टिलाइजर्स रे हमर यूज हुए यस और नो यस नेक्स्ट मते को मैम ओपीएससी ओसीएस क्लास आउ नो ना देखी मैम हुदुली दफ्तर ना रे दफ्तर एबे हमर बहुत जल्दी ओसीएस बैच स्टार्ट हो जाउची देन तमे वेदांग क्लास रे पाई जिवो ओके वेदांग क्लास रे ओसीएस रा क्लास मु साइंस एंड टेक आपनकर प्रोवाइड करबी डोंट वरी एठो देखिबो सो व्हिच इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमें कहा को कहू छे मते को यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमें कहा कहू छे ऑब्वियसली सबु मिसी जाउची वाटर ही कहिबा किछि गोटे रॉकेट साइंस नै भाबिबोनी कि बहुत पिला ना इजी क्वेश्चन ना को एते भाबी दियंती केते इजी क्वेश्चन कर पड़े मन इच्छा आंसर मारी दियंती यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट इज द डिजॉल्व मोस्ट सब्सटेंस हे जाय दैट इज द यूनिवर्सल सब्सटेंस हमें कहि परिबा दैट इज द बेसिस ऑफ बेसिक लाइफ ऑफ केमिस्ट्री आल्सो ओके इथर को हमें कोन कहू छे ना जदी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपन को पचारिला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट गाइस पचारिले ताहाले आपन माने इथर मारिबे बेंजीन दैट इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट छाडी दियो नेक्स्ट मते को व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट को हमें आर्टिफिशियली राइपनिंग करू छे कदली कांधी काटी के आनु छे देन हमें सेतरे कोन पको छे से पाची ही जाउ छी सो जे कोनसी फ्रूट हो छे हमें ताको पचेया पे कोन यूज करू छे मते कहिलो वेरी गुड दैट इज द एसिटिलीन ऑक्सीजन ता माने एमिति से नौ चंती ऑक्सीजन किसी यूज ही नाही सो इंडिया रे हमें कहि परिबा यूज इन इंडिया फॉर राइपनिंग दैट इज द एसिटिलीन okay very good and eta कहउथरे that is the acetylene is the mimics of the ethylene gas रो मिमिक होची कोन ना acetylene नाइट्रोजन ने सब नाही चलो नेक्स्ट मते को व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग द बल्ब रो फिलामेंट यूज करछो जते बेले अपन माने जे कोनसी बल्ब तयारी करूछो जानिछो ता भीतर गोटे फिलामेंट लागि थाए तो ए फिलामेंट तयारी हेबा पई हमर कोन लागे को मते
द फिलामेंट ता तयारी हेबा पई हमर कोन यूज हुए व्हाट टंगस्टन ताकू कोन ना मैम टंगस्टन हम यूज करू छे कॉपर कोथरे वायरिंग पई यूज होची फैन रो वायरिंग हेला से सब बाइंडिंग हेला से हम कॉपर यूज करू छे एल्युमिनियम दैट इज अ गुड कंडक्टर्स ताकू छाडी दियो टंगस्टन कोन होची गुड कंडक्टर्स हेले आपण तो यूज कर परिबे ने फाटी जीवो ना so that is the high melting power high melting point amara tungsten pakhare achi that's why amara filament रे ଆମେ यूज करछे and this is ideal for the filament also clear iron तो छाडी दियो रस्ट कोन so 50 टा क्वेश्चन हे गला गाइस अगेन दबानु कहूची 3499 रहूची प्राइस 1.5 ईयर ऑफ वैलिडिटी ता भीतर आपण मानकर जते भी ओडिसा गवर्नमेंट एग्जाम आसीबो महापैक अंडर रे ही कवर अप हे जीवो किछि भी क्वेरीज अछि बैच परचेज करिया पई देन डू कांटेक्ट विथ दिस नंबर and get the help during the purchase of batch next same 1 year validity कोन ना मैम 1499 होजी वेदांग टीचिंग एग्जामिनेशन रा सीबीजेड हला पीसीएम हला आर्ट्स हला हमर ए कोन 1499 प्राइस भीतर पळिबो दैट इज द एक्सक्लूसिव पेड बैच एंड द द्रोणो 1.0 नेक्स्ट चलो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज ठीक है बायोलॉजी को आसीबा कोन कहूछ 100 क्वेश्चन सॉल्व तो कोन स्वाहा करूछ 150 क्वेश्चंस अछि देखो एबे घंटाटे गला मात्र घंटाटे हेछि ना सो घंटा करे गोटे 50 टा क्वेश्चन टारगेट थिला ऑलमोस्ट कवर अप हे जाय 10-15 मिनिट एपट सेपट हुए जानिछ चलो सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हमें कहा को कंसीडर करछु मते को सॉरी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हां द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हमें कहा को फंक्शन करू कंसीडर करछु ठीक को जस्ट गिव मी 1 मिनट not drink diet coke तो चलो the functional unit कहा को हमें कंसीडर करछे that is the nephron कहा को ना मैम nephron को कंसीडर करूछे yes or no yes that is nephron okay so the functional unit of kidney so is kidney has almost हमें कहि परिबा 1 million of nephrons consider थाते ता भितरे न्यूरॉन कहले कोन बुझुछो that is the functional unit of nervous system जदि आपण मानकू functional unit पचारिला कोन ना मैम functional unit of nervous system पचारला then go for the neurons alveoli guys कोन exactly मते को alveoli जिंसडा कोन हां मौसुमी इट्स ओके तो को alveoli कोन कहूची that is the functional unit of the lungs सहित हमें कंसीडर करूचे काहा को ना मैम alveoli को this is the site of gaseous exchange हमर हुए gaseous exchange हुए this is the alveoli then villus कोन कहूचे villus हमर ओटे finger like हमर कोन projections थाए like small intestine भीतर this is a part of small intestine मन रख small intestine रे ये गोटे part गाइस बहुत सारा क्वेश्चन बनै छी सेति लागि पिक्चराइजेशन करिनी अदरवाइज हम इजीली बुझता नेक्स्ट मते को व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इंपोर्टेंट एंड इजी क्वेश्चंस आनी छी जेंति त मानको बेसी डिफिकल्ट हबनी बुझिया नेक्स्ट मते को हमर ब्लड क्लॉटिंग पई को विटामिन यूज हुए यस अलीशा मशरूम सेप्रा that is the vitamin K कोन हबो ना मैम विटामिन K एंड ताको हमें कोन कहू that is essential for the prothrombin synthesis in the liver हमर हुए prothrombin synthesis in the liver that is the vitamin K and vitamin K deficiency रे हमर कोन हुए the excessive bleeding हुए एटा मन रखिथाओ so vitamin B12 से रिलेट करछो कोन ना मैम RBC formation हुई हमर कोन ड्यू टू द विटामिन B12 जदि बॉडी रे हमर भलो प्रेजेंट थिबो रेड ब्लड सेल भलो कि हमर कोन ना फॉर्मेशन हे परिबो विटामिन A एंड D ऑलरेडी त मन को कहि देछि विजन एंड विटामिन D फॉर द कोन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ पई आपण रिलेट करबे नेक्स्ट मते को रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्मड इन रेड ब्लड सेल हमर कोथरे फॉर्म हुए टनल मारी की फटे देबी तुमको चलो सो रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्मड इन red blood cells are formed in where मते को liver रे फॉर्म हुए कि no मैम kidney heart कोथरे yes that is the bone marrow and that is the main site of the कोन ना that is the hematopoiesis रो main site होची bone marrow RBC रो लाइफ स्पैन पचले केते कहबो ना लाइफ स्पैन
Lifespan of RBC is 120 days. आमर WBC रा केते ना only 3 to 4 days. मन रखि बात की very good. Kidney सहित कहिलो से हमर कोन प्रोड्यूस करे ना से हमर स्टिमुलेट करे RBC प्रोडक्शन को. That is produces the in हमर कोन that is the erythrocyanin. कोन erythro something not exactly मन पड़नी that is erythropoietin. Erythropoietin आमे कहि परिबा हार्मोन आको रिलीज करे. हार्ट सहित रिलेट करबा कोन ना हार्ट रो काम कोन होची ना ब्लड पंप करिबा हार्ट रो काम. Yes or no? Yes ma'am. चलो next. मते को द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर हमें केते कंसीडर करछ मते को द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑप्शन बी वेरी गुड. दैट इज इक्विवेलेंट टू केते जदी सेल्सियस रे पचारिबो जदी सेल्सियस रे पचारिबो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द सेल्सियस केते रहइबो 37 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड. के कहला एटा नंदिनी. Thank you. Very good. That is 37 degrees Celsius. Yes or no? Yes or no? Very good. Chala. Next mate kuha which part of the brain controls the balance and posture? Balance and posture amara brain no gote part taku maintain kare. Okay, which part of the brain controls the balance and the posture? Balance and posture टाइम कौन यूज करछो देखो सेरिब्रम एंड सेरिबेलम भीतर बहुत पिला कंफ्यूज होंती. द राइट आंसर कौन होबा ना मैम सेरिबेलम. ऑप्शन सी आसी गलानी चित्तरंजन महांती कर. ऑप्शन सी माने आउट ऑफ द सिलेबस से पळैलेनी. क्वेश्चन ना डिमांड किछि से क्वेश्चन ना आंसर किछि दउचंदी. सेरिब्रम एंड सेरिबेलम भीतर पिला कंफ्यूज होंती बट ऑल ऑफ द सडन त माने पढले सर मेडुला ऑब्लांगाटा हमर कहूछि कोन दैट कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक हम कहि परिबा हार्ट बीट हैला ब्रीदिंग हैला जति को इनवॉल्यूंटरी एक्शन ना से मेडुला ऑब्लांगाटा आपण कर करे हैला. बुझि पाला चित्तरंजन डाउट किछि रखिबनी क्लियर हे के बुझिबो. सो दैट इज द इनवॉल्यूंटरी एक्शन सहित आपण माने रिलेट करिवे दैट इज मेडुला ऑब्लांगाटा. यस और नो? यस मैम. इनवॉल्यूंटरी कहिले आपण माने मन रखंतु हार्ट बीट हैला ब्रीदिंग हैला जोटा को हम माने फील करि पारुछि कि बॉडी भीतर एटा हमरा हार्ट टा को टच कले ना बीट होउची माने रखिले सामने रे नाक पाखरे जदी हाथ रखुछो जानुछ कि किछि गोटे हवा तो आसुची. यस और नो? हां चलो नेक्स्ट मते को सेरिबेलम हेले कोन कहितली ना मैम दैट कंट्रोल्स द पोस्चर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. जदी आपण माने को सेरिब्रम सहित रिलेट करिवार अछि मेमोरी हैला थिंकिंग हैला मेमोरी एंड थिंकिंग सहित याको रिलेट करि पाइबो. Yes or no? Yes. चलो नेक्स्ट बा वेरी गुड. हां हाइपोथैलेमस तो छाडी देली. हाइपोथैलेमस को रिलेट करबा कहा सहित को मते ना हंगर हमर आसुची माने हमको भोक जोरे लागुची हमको शोष भी लागुची लाइक हमर हंगर हैला थॉट्स हैला इमोशन हैला हार्मोन्स हैला याकू सब आपण माने हाइपोथैलेमस सहित कनेक्ट करिवे कोन मैम हंगर थर्स्ट इमोशंस ए सब को आपण माने कोन ना मैम आमे हाइपोथैलेमस सहित रिलेट करिवो इंक्लूडिंग द हार्मोन्स भी लिखि दियो. हार्मोनल इम्बैलेंस हेले त मानकर मूड स्विंग हुए जे माने हुए ना नहीं. नेक्स्ट चलो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी रो लार्जेस्ट ग्लैंड आमे कहा को कहूचे को ह्यूमन बॉडी रो लार्जेस्ट ग्लैंड आमे कहा को कहूचे ऑलमोस्ट कोन ना 1.5 केजी तार वेट 1.5 केजी गाइस तार कोन ना वेट मैम दैट इज द लीवर कोन दैट इज द लीवर आमे कहूचे. पैनक्रियास हबनी दैट इज द डुअल ग्लैंड हमर कोन एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम रे मन रखछे दैट इज द पैनक्रियास इज डिवाइडेड मन रखिता. ओके नेक्स्ट चलो एंड कहले लीवर रो फंक्शन तार रोल कोन ना मैम से हमरा बाइल को प्रोड्यूस करूची प्रोड्यूसेस द बाइल दैट इज स्टोर्स इन द ग्लाइकोजेन एंड द डिटॉक्सिफिकेशन करे दैट इज द लीवर. ओके सो आपण माने डेली जदी 3-4 कप ब्लैक कॉफी पीले एते पियंतुनी 3 कप भी पियंतु 3 कप ब्लैक कॉफी पिउसंती ताले आपण मानकर लीवर कोन गाइस बढ़िया के डिटॉक्सिफाई हिजिवो मान मो कथा टिके पियो हैला. चलो नेक्स्ट आसो सिल्वर सॉरी सैलिवरी ग्लैंड हेले कोन कहूचे ना हमर सैलिवा प्रोड्यूस करूची ये कोन प्रोड्यूस करूची सैलिवा जेटा कि हमर खाद्य सहित लारोटा मिसी की जाई कि डाइजेशन रे हेल्प करूची. ये सर नो चलो नेक्स्ट मते को टिके प्लीज. Which blood group is a universal donor?
ज्योति पीव आज से हौ कलानी ज्योति पी की मते फोटो शेयर करियो हला चलो सो यूनिवर्सल डोनर आमे कहा को कहूचे मते को यूनिवर्सल डोनर मैम ओ एंड यूनिवर्सल रिसिपेंट किए मैम एबी तमे भाबुथु मैम गोटे गारे दोछन स्पेलिंग बोधे भूल भाल मारी दोथवे यूनिवर्सल रिसिपेंट होचे कि ना मैम एबी एटा मन रखिबो वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड आमे कोन ना मैम इनहेल करूचे ऑक्सीजन को एंड एक्सहेल करूचे कहा को ना मैम कार्बन डाइऑक्साइड ए प्रोसेस को आमे कोन कहूचे मते को हां रश्मि तमे भी पीबो फोटो भी छाडियो सब गोटे ब्लैक कॉफी धरिबो फोटो छाडियो हला पी के छाडिबो हला धरिबो पुनी फोपाडी दबा हबो so the process is called respiration कौन कहूचे देखु ना मैम the process is called respiration the biological process of energy releasing that is the external plus internal respiration is called the respiration digestion हेले the food breakdown होची the breaking of food हमें consider करि परिबा कोन ना मैम breaking of food then digestion excretion कौन कहूचे ना the removal of the nitrogenous waste removal of the nitrogenous waste हमें कहूचे removal of nitrogenous waste then कहला circulation कहले कोन बुझिछो circulation कोन होची ना जते हमर फूड ता ट्रांसपोर्ट होची माउथ रे हम स्टार्टिंग पॉइंट माउथ खाउचे देन हमर डाइजेशन होची स्टोमक रे देन पुन एक्सक्रीशन होची द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सॉरी फूड काई रिलेट करची रे ठी सर्कुलेशन द ब्लड हबो ना सॉरी ब्लड सहित रिलेट करिबो food सहित काई करची दैट इज द डाइजेशन रे पड़ेबो food is also the part of digestion yeah that is circulation is the related with the blood चलो next मते को which organ regulates the body temperature को organ हमारा regulate करे चन्ना पीले कौन हबो चन्ना पीले कौन हबो माने चाहा पीले कौन हबो चाहा पचारछ ना चन्ना कौन चन्ना ना छास कौन पचारछ रे तो which organ regulates the body temperature body रा टेम्परेचर हमर को organ को हेले मते body रा टेम्परेचर सहित हमें रिलेट करूछे को organ हमर जरा आसिला देन त माने चेक करूछो अच्छा देखिलो तो स्किन को टिके टच करिकी जरा आसीची ना नाही ओ माय गॉड तमरो 102 डिग्री ओ माय गॉड यू टेक मेडिसिन प्लीज पैरासिटामोल खाओ प्लीज डोलो 650 खाओ सो कोथि पई ना ए स्किन पई यस वेरी गुड चलो सो हार्ट रा काम कोन होची दैट इज पंप्स द ब्लड रेटी पीले किछि हबनी रेटी पीले किछि हबनी ना तमे मोटा हबो ना तमे पतला हबो तमे हे कोन बाक चाहछो मोटा हेबाकू चाहछो पूरा व्हाइट टी पियो माने हमर नॉर्मल टी पियो खीर वाला टी हैला आ जदी पतला हेबाकू चाहछो ग्रीन टी पियो ना को मात्र से मझी मझी काई पियो चलो नेक्स्ट मते कुआ अच्छा रिलेट करिनेडा मते को हार्ट रा काम कोन ना से ब्लड पंप करूची देन किडनी रा काम कोन ना फिल्टर करूची वेस्ट को ये कौन करूची ना फिल्टर करूची वेस्ट को देन पैनक्रियास रा काम कोन मते कुआ पैनक्रियास रा काम कोन करूची मते कुआ टिके दैट सिक्रेट द इंसुलिन ग्लूकागॉन ये सब कोथरो बाहरुची ना मैम इंसुलिन नामक विटामिन एंड ग्लूकागॉन ये सब को सिक्रेट करूची किए ना मैम दैट इज द पैनक्रियास यस और नो यस तो चलो नेक्स्ट को which type of blood cells fight against the infection मते को blood cell फाइट करूची इन्फेक्शन अगेंस्ट रे भारती कोन हैला काई की पूरा माने पाटी आ करी की चिल्लोच चलो कोन हैला केउडे कोन कहिला कारोटे पोझियो हैला मिठा खाइबु से आंगलानी चलो which type of blood cells fight against infection against रे फाइट करूचे WBC अरे हां मैरिज कथा मने पड़ला बाघर बा कोन मैरिज हे जाईची बाघर मैरिज हो जाईची बाघ क्लास रे नहीं आजी मिठा पिठा देनी किछि नाही डाकिनी भी गोटे पिला बाहाई जाईची हां सोनल बाघर पुओ हिच तमरो छाड़ पत्र हिच ना कि बदमाश ए पिलाटा ही ता नारे मिछ स्प्रेड करूची चलो सो WBC को हमें कौन कहूचे दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स दैट लाइफ स्पैन केते जस्ट 4 to 5 डेज हमें कंसीडर करूचे एंड दैट इज हमें कौन कहूचे द हमर कोन डिफेंस करूची हमर इन्फेक्शन अगेंस्ट रे WBC एंड WBC केते टाइप रे ना मैम तीन टाइप रे दैट इज द न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स मन रख
ओके मोर जेबे हम तुम समस्त डाक तुम मैंने घरे ना कौन चीटर किए बाहर पड़ो किए क्या सहित धरिक पड़ो किए बाहर जाऊँगी बापा मना कर मो झील को छाड़ी दियो से नहीं छाड़ी दूसरी से सब ना मुझे तुमको जनइबी कहीं दूच तो आरबीसी सहित रिलेट कर कौन दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट गाइस तो प्लाज्मा सहित आम क्या रिलेट करबा ना दैट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन कौन ब्लड भीतर हमर प्लाज्मा कोथि पई थाए से हमर न्यूट्रिएंट हैला हार्मोन हैला ता सहित रिलेट करबो न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करूची यस और नो यस गाइस आरबीसी कहली प्लेटलेट कहली डब्ल्यूबीसी कहली चलो नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी रो सबुटु स्मॉलेस्ट बोन आमे काहबु कहिबा 36 भाई मु मना करथुई तमे आसुथिबो बुझिलो चलो हाँ भर जात्री रे समस्त गोटे थाई प्लेटर मिलियो आसीबो बदमाश चलो द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कहा को रिलेट करिबा ह्यूमन बॉडी रो स्मॉलेस्ट जोटा हम कान भितर अछि ताको हमें कहूचे दैट इज द स्टेप्स कोन कहूचे ना स्टेप्स जदी लॉन्गेस्ट पचारिला ताहाले अपन माने फीमर कहिबो दैट इज द थाई बोन कहा को मैम थाई बोन थाई प्लेटर नहीं रे थाई बोन से रिलेट करिबो स्टेप्स रहले हमर कोन ना ईयर इनसाइड द मिडिल ईयर हमर प्रेजेंट अछि ऑसिकल भीतर प्रेजेंट अछि आइदर अपन माने को स्टेप्स पचारिबो और जदी ऑसिकल थिबो ताहाले भी राइट आंसर मारिबो क्लियर ओके चलो जदि लेग रो लॉन्गेस्ट बोन पचारिला ताहाले टिबिया को मारिबो टिबिया को पचारिबो हला चलो सिट केतेटा क्वेश्चन पळेला आगु को चलो व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल अच्छा को हार्मोन हमर कहला ब्लड अच्छा हाउ लीजा ठीक अछि तो को व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल को हमरा रेगुलेट कोठी हुए कहला व्हिच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल नथिले हमें कोन डेफिशिएंसी ब्लड शुगर डेफिशिएंसी हेले हमर कोन डायबिटीज बाहरी जाउची हमर कोन एफिशिएंट माने अधिक हेले भी बाहर जाउची सो हमें इंसुलिन को इंजेक्ट करूचे माने अछि द सिक्रेटेड कोठू इंसुलिन एक्जेक्टली हमर सिक्रेटेड कोठू होची ना मैम इट इज सिक्रेटेड बाय द कोन पैनक्रियास दैट इज अ बीटा सेल बोली हमें कहूचे दैट इज द लोअर ब्लड शुगर को हमें कोन कहूचे दैट इज द इंसुलिन क्लियर गोटे आपनकर हाई शुगर चेक करा जाय गोटे लो शुगर चेक करा जाय लो शुगर थिले आपन माने कोन ताको इंसुलिन कहिबे मैम को खुशी अलग प्रकार तो मैंने मो खुशी की केमती मापी दूज रे हाँ अरे मैम को बाहाघर टिके बाहर के क्लास को आस कि पिल्ला माने मैम को बाहाघर तो तम मैरिज सॉरी मैम को बाहाघर तो तम माने एग्जाम आगुरु होनी तो एते ओरिड काहे होचा चलो सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रो लार्जेस्ट पार्ट हमें काहा को कहूचे मते गोटे 35 खंडे हेलानी कार्तिक मते गोटे 35 वर्ष हेलानी बुझिलो आउ 25टा वर्ष पर मु भत्ता पाइबी चलो सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कहा को हमें कहूचे ह्यूमन ब्रेन रो लार्जेस्ट पार्ट आपन बेटी पचारिची दैट मींस आपन कोन कहबे दैट इज द सेरिब्रम कोन ना मैम सेरिब्रम हबो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सॉरी ह्यूमन ब्रेन रो ओके very good so cerebellum that maintains the balance medulla that involuntary activities amar kare medulla oblongata and what is the phones that relays the signals between the brain parts amar ei phones manankar काम कोन ने से सिग्नल को चेक करे पिंपुटे कामुडिला सिग्नल धरला जा ताकू बाडा लेफ्ट हैंड को पिंपुटी कामुडला राइट हैंड देख ताकू पीट राइट हैंड को कामुडला लेफ्ट हैंड देख ताकू पीट सो इंस्ट्रक्शंस के दिए ना मैम ड्यू टू द phones ओके चलो नेक्स्ट मते को Next, which organ purifies the blood by the removing the nitrogenous waste? That means हमारा blood को purify किए करे मत देखो. Which organ purify करे blood को purify किए करे ना मैम that is the kidney. किए करे अच्छी तो समझते करो सही सलामत दीदी टा किडनी अच्छी ना गोटे जाइची हाँ सोनल दीदा देखो किडनी अच्छी तो हिबो I hope थाउ. So lungs कहूचे कौन that is removal of carbon dioxide removal of carbon dioxide हमें relate करछे that is lungs that means हमर कोन exhale हमें करूछे yes or no तो किडनी को रिलेट करछे कहा सहित ना मैम that is filter करूछ का को ना यूरिया को फिल्टर करूछि and यूरिक एसिड को भी फिल्टर करूछि क्लियर हार्ट
ब्लड को पंप करूची पैनक्रियास हमर एंजाइम सिक्रेट करूची नेक्स्ट The voice box in humans is called मु जो चिल्ले तमन को राती 10 रे पढौची कोथि पई से जो voice box ता हमर अछि सेटा रिलेट कहा सहित हबो मते कुआ सेटा pharynx सहित हबो larynx सहित हबो trachea सहित हबो या फिर epiglottis सहित हबो कहा सहित रिलेट हबो टिके कहिलो related with pharynx हे मु पढी जिबी तळे गाइस nose रो mouth को जोडा कनेक्ट हेछि ना to the nose to mouth को हमरा कनेक्ट हेछि ताको हमें कहूचे that is the pharynx that is the passage connecting कोन ना मैम nose and mouth को कनेक्ट करिछि जोटा ताको हमें कहूचे pharynx राइट आंसर कोन हबो ना वॉइस बॉक्स ताको हमें larynx कहूचे larynx ओके loud कोठ आसे voice is our कहूचे ना मैम your voice is so loud so loud कोठ कहूचे that is the voice को loud कहूचो so related with the larynx yes or no yes so trachea that is the wind pipe जो थिरा हमरा कोन गैस एक्सचेंज होची जो पाइप रे गैस एक्सचेंज होची जो wind pipe को हमें कोन कहूचे ना मैम that is called as the trachea then epiglottis का कहूचे epiglottis मैम that is the flap preventing the food entry into the wind pipe माने हमर गोटे डिफरेंट सेक्टर थाए खाइबा भी हम एठी खाउचे त माने केबे भाबिचो खाइबा भी खाउचे ब्रीथिंग भी करूचे इवन पानी भी पिउचे सो खाद्य एंड पानी हमर कोन गोटे साइड रे जाउची किंतु पवन गोटे साइड रे जाउची हां ना नहीं सो दिस इज द फ्लैप दैट प्रिवेंट द कोन फूड जेतेबेले एंट्री करूची सी हमर थाए ना अरे श्वासनळी भितरे खाद्य अटकी गला सेति पय नागु हॉस्पिटल को निया जाईची दैट इज व्हाट दैट इज द एपिग्लॉटिस एटा रिलेट करके मन रखिबो भक्त बंधु जियोग्राफिक साइंस क्लास रे आसी कि से को दिन रे जियोग्राफी कथा पचाला हो दिस इज व्हाट एंड दिस इज द flap that don't allow the food to go to the कोन ना मैम wind pipe एटा रिलेट कर दिया लिखियो नेठी wind pipe से रिलेट करो इठी चलो नेक्स्ट मते को the pigment responsible for the skin color अच्छा skin रो कलर आपण मान करो skin रो कलर okay so the pigment responsible for skin color that is the chlorophyll melanin hemoglobin keratin का सहित रिलेट करूछ मते कुआ प्रत्येक बेहेरा हेला कोन तमरो हेला कोन may I know the reason so the pigment responsible for skin color पाई आपण माने भी जानि छथि मु भी जानि छी that is the melanin pigment कोन ना melanin pigment मैम हम ताको कहू that is produced by the कोन melanocytes that is protects हम कोतरो ना UV rays रु से प्रोटेक्ट करी रखे एंड आपण माने जदी पतले क्लोरोफिल आपण माने जानि छथि प्लांट्स रे हमें क्लोरोफिल पाउचे फोटोसिंथेसिस रे होउची एंड क्लोरोफिल हमर क्लोरोफिल प्रेजेंट होइदारु क्लोरोप्लास्ट को हमर किचन ऑफ द प्लांट कहउची देन मते कहिलो सेम हेमोग्लोबिन कहले कोन कहउछ ना रेड पिगमेंट हमर ब्लड रे जदी पचरा गला ब्लड रो कलर गाइस रेड कोन पई ब्लड रो कलर रेड कोथि पई ना मैम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ hemoglobin in the blood then कहलो कैरोटीन कोन ना दिस इज द येलो पिगमेंट ऑफ द स्किन और वेजिटेबल्स कोन ना स्किन रो वेजिटेबल्स रो जो येलो पिगमेंट हुए येलो पिगमेंट हो जे हमरा कोन ना मैम दैट इज द कैरोटीन क्लियर चलो नेक्स्ट मते को द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज ब्लड ता कोन पई थिक हेनी ब्लड ता इते फ्लूइडी कोन पई गाइस कोन हैला प्रतीक रो कोन हैला कोन से कहू जे प्रतीक व्हाट हैपेंड टू यू कोन तार मेसेज पढो छी मु पढी भी परुनी ए प्रतीक आउटर मेसेज करो एते ऊपर जाई होनी चलो सो मते हुआ so the fluid part of the blood that is known as what na ma'am plasma so plasma थिबारु हमें कोन कहू जे ना fluid रो कलर सॉरी fluid रो टेक्सचर ता हमर कोन ना मैम बहुत ही fluidy आसुची माने सॉरी blood रो टेक्सचर ता fluidy आसुची ओके तो 50% of blood that is present in plasma yes or no yes ma'am amar nutrient transport ke karuchi na due to the presence of this plasma then hormones and waste everything amra kon hame plasma se relate karuchi serum kon kahuche na ma'am that is the plasma without the clotting factors that is the kon na serum kahuche platelets ele kon kahuche na obviously amra clotting cell platelets right rbc that is the red blood cell jo oxygen carry karuchi next chalo
Which vitamin is produced in the skin in presence of sunlight? Sunlight presence रे मते कुआ को vitamin produce होची skin रू कोटा sunlight the sunshine vitamin हमें ताकि कोचे sunshine vitamin कोचे vitamin D vitamin A कोथ पे ना vision पाइन बट पर vitamin D रो D3 form रे हमर को ना sunlight रे रहउछ clear very good चलो next already vitamin C के 50 थर कहली next चलो which disease is caused by the insulin deficiency मते को insulin deficiency रे हमरा को disease हुए जोथरे हम insulin intake करू छे कोन होची that is the diabetes mellitus कोन diabetes mellitus goitus कोथि पई हुए ना मैम iodine deficiency रे deficiency रे अच्छा स्कॉर्पी कोथरे हुए ना मैम विटामिन सी deficiency रे हो ना नहीं स्कॉर्पी विटामिन सी रिकेट्स विटामिन डी रिलेटेबल वेरी गुड चलो बी फाइनल नेक्स्ट व्हिच ऑर्गन सीक्रेट्स द बाइल जूस हमरा को ऑर्गन नो सीक्रेट हुए बाइल जूस हमरा को ऑर्गन नो सीक्रेट हुए गाइस व्हिच ऑर्गन सीक्रेट्स द बाइल जूस लिवर पक्का हेई देखो गॉल ब्लैडर मालानी एट द रेट मालानी गॉल ब्लैडर ना कि बाइल को स्टोर करके रखे जदी अपन मानु के पचरा गला बाइल को गाइस बाइल को स्टोर करके के रखे मते गुआ दैट स्टोर द बाइल्स ये होची गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल दैट इज गॉल ब्लैडर सीक्रेट के करे ना लिवर सीक्रेट करे पैनक्रियाज रो इंसुलिन सीक्रेट हुए एंजाइम सीक्रेट हुए यस और नो किडनी कौन करे ना ब्लड को फिल्टर करे सॉरी मैम सॉरी का बच्चा चलो नेक्स्ट पते इडी सॉरी कहि दोछ एग्जाम रे कोन करबो मैम थिबे तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट्स इज अबाउट नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमें कहा को चूज करू छे मते को नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन द एडल्ट्स इज अबाउट केते ना मैम दैट इज 180/80 सॉरी 120/80 केते रहउजी दैट इज द 120/80 इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर वी कंसीडर्ड एज द कोन एडल्ट रे ओके क्लियर 120 हमरा कोन ना सिस्टोलिक दैट इज द हार्ट कंट्रैक्शन करूची एंड 80 टा कोन कहूची जो 120/80 रहउची गाइस केबे भाबी छ 120 कोन 80 कोन ना 120 हमरा हार्ट रो कंट्रैक्शन रेट टा हमें मापुचे दैट इज द सिस्टोलिक हमें कंसीडर करूचे 80 दैट इज द डायस्टोलिक हमें कंसीडर करूचे दैट इज हार्ट तले रिलैक्स होची दैट इज द डायस्टोलिक सो टोटल 120/80 हमर होची नॉर्मल हार्ट रेट एटा मन रखिबो लिखि दोची न तमे कंसीडर को सपोज केबे जानि थिबो भूलिबनी 120 हेले कोन कहूचा दैट इज द सिस्टोलिक ओके सिस्टोलिक दैट मींस कोन ना मैम जते बेले आपनकर हार्ट ता कोन करे ना मैम हार्ट जते बेले हमरा कंट्रैक्ट्स करे कोन ना मैम कंट्रैक्ट करे कंट्रैक्शन हुए ता सहित रिलेट करिवो सिस्टोलिक 80 ता कोन ना मैम जते बेले हार्ट ता हमरा रिलैक्स हे जाय कोन हुए ना मैम रिलैक्स हुए ताको हमें कहूचे 80 दैट इज नोन एज व्हाट ना मैम दैट इज द डायस्टोलिक just a basic information okay jiba next which part of the eye is sensitive to light entertainment ro heart break he gala छेबे सोदी भी जो तो मैंने भी कहयो मैथ आपन के सोदा भी बढ़िया लागु छी ना गिरे चला so which part of the eye is sensitive to light को पार्ट हमरा आई रो सेंसिटिव थाए लाइट को towards light it is being very sensitive कोनिया तो बिल्कुल नो that is transparent from the कोन हमरा कोन covering of the eye that is the cornea covering of eye को अपन माने कंसीडर करिवे eye रो offer covering को हमें कोन कहचे covering of eye is considered as the cornea right answer कोन हबो ना मैम रेटिना कोन हबो ऑप्शन डी हे ऑप्शन डी अपन कर पळे आसिला कोथि पई हमर इरिस ता कोन की इरिस ता कोन that is the colored part of the eye अपन कर कार ब्लू कलर कार blue eyes कार red eyes कार brown eyes कार black eyes that is the color only that controls the amount of light entering माने हमर pupil size को भी अपन कहि परिबे pupil size को नै कि कहि परिबे iris right answer retina हबो किछि भी गोटे मारि दोचो किछि गोटे मारंदी बोली मारि दोचो ना भाबे कि मारुछो so the inner layer of the eye that containing the rods that is the dim light
and connects with the color vision जदि अधिक जोर आपण मानकर लाइट पड़ियो सडन आखिटा बंद हे जिवो देन किछि टाइम ताकू टिके कोन हैबिचुएट हे टाइम लागो तापर से के मैं आखि अनुच माने भाबो बहुत निघोर निदर केबे सोइथिबो सकाळ तुमको सडन के उठेला तमे जाई कि सनलाइट को अनै भी परिबनी बाहर को अनै परिबनी इवन मु तो अनै पारेन मते 10 मिनिट लागे उठी की बसी की तापर टिके डिम लाइट रूम लाइट रू पुनी बाहर लाइट को जिबा पई so this is due to the retina next which part of the human skeleton protects the brain human skeleton जोटा कि हमर ब्रेन को प्रोटेक्ट करूची को पार्ट स्पाइनल कॉर्ड तो आसीबनी कारण त ह्यूमन रो ब्रेन रो पार्ट तो बिल्कुल मो दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट ना मैम नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड इज द नर्वस सिस्टम नॉट द skeleton so related with a very good guys that is the skull जाहो त मानकर ब्रेन अछि सेटा जानि कि भारी खुशी लागिला हां एंटोलिना किछि भी एंटोलिना रो क्वेश्चन उडा आज मते मजाक लागछ तो रीफ केस कोन कहूची ना हमर हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करूची जो पिंजरा हाड़ हमें कहूचे कोन जो ह्यूमन बॉडी रे हमर जो पिंजरा हाड़ सब रही छी ना ताको हमें कोन कहूचे ना मैम दैट इज द रीफ केस एंड ये हमर का ना मैम हार्ट को एंड मैम लंग्स को हार्ट को एंड लंग्स को ये सेफ रखुची वर्टिब्रल कॉलम कहले कोन होचो ना दैट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड करची गोटे बॉडी सपोर्ट दोउची ताको हमें वर्टिब्रल कॉलम कहूचे दैट प्रोटेक्ट द कोन ना स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करूची दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम गेटिंग मी चलो नेक्स्ट द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स एबे आसा क्वेश्चन को एटा पचारे को एटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रे पचारे ह्यूमन हार्ट रो केतेटा चैम्बर अछि मते को ह्यूमन हार्ट रो गाइस चारिटा चैम्बर अछि कोन अछि मते को राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एति के मन रखिबो एट्रियम वेंट्रिकल खाली मन रखो देन राइट लेफ्ट लगे दो एट्रियम वेंट्रिकल खाली मन रखो देन लेफ्ट एंड राइट टोटल चारिटा चैम्बर दीटा कहार अछि ना मैम फिश रो दीटा कहार चैम्बर अछि यदि पचरला फिश विषय रे ताहले दीटा चैम्बर अछि दीटा हार्ट चैम्बर कहार ना मैम फिश रो अछि यस और नो मते को यस मैम यस तो वेरी गुड सो तीनिटा कहिले कोन कहउछ ना एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स मानकर कहार एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स मानकर अछि एंड रेप्टाइल्स बट एठी मन रख एक्सेप्ट किए ना मैम क्रोकोडाइल को छाड़ी के बाकी जते एम्फिबियंस रेप्टाइल्स अछंती से मान को हम माने चूज करि पारिबे ये सनो हां से माने फ्रॉग भी हमन पळेबो सेथिरे फ्रॉग भी पळेबो 3 रे हैला चलो नेक्स्ट मते को व्हिच एंजाइम इन सालिवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च डाइजेशन करिबारे की हेल्प करे मते को ये सूर्य एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल मते को व्हिच एंजाइम इन सालिवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च डाइजेशन करिबारे की हेल्प करे पेप्सिन तो बिल्कुल करिबनी कारण प्रोटीन डाइजेशन करिबारे पेप्सिन हेल्प करे काको मैम प्रोटीन डाइजेशन रे हेल्प करे यस और नो यस मैम एटा कोडी ना स्टोमक रे थाए राइट आंसर कोन अब ऑप्शन बी वेरी गुड दैट इज द टाइलिन कोन हबो ना टाइलिन को हम आउ कोन कहूचे ना सैलिवरी अमाइलेज बोली कहूचे दैट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द माल्टोज सो स्टार्च जते हमें खाइबारे अछि ताकू कोथिरे ना मैं माल्टोज रे कन्वर्ट करूची ए टाइलिन यस और नो यस मैम लिपेज कोन करूची ना से ब्रेक डाउन करूची फैट को ये ब्रेक डाउन करूची ब्रेक डाउन फैट्स ए ट्रिप्सिन कोन करूची मते को ट्रिप्सिन ना काम कोन जानि छ दैट डाइजेस्ट द कोन ना मैम प्रोटीन को डाइजेस्ट करूची हमर की ना ट्रिप्सिन हमर कोन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ए माने कहा को ना मैम प्रोटीन को डाइजेस्ट करिबारे हेल्प करे ए पेप्सिन ता हमर कोठी ना मैम स्टोमक रे ए ता हमर स्टोमक रे थिबा प्रोटीन को डाइजेस्ट करिबारे हेल्प करे whereas pancreas रे थिबा प्रोटीन को दैट मींस pancreas the protein digestion helps in हमर कोन पैनक्रियास रे जो प्रोटीन डाइजेशन हुए ताकू ट्रिप्सिन ताकू डाइजेस्ट करे बट हमर स्टोमक रे जोटा हुए एटा पेप्सिन करे एटा मन रख हैला चल नेक्स्ट मते को अच्छा अगेन 75 हे गला 3499 गाइस 1.5 ईयर जो
माने लाइक शेयर करिना से माने शेयर करते 1.5 ईयर भीतर जते भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन अछि एक्सेप्ट द ओसीएस वन आपनकर वन डे एग्जामिनेशन या अंडर रे कवर अप हे जिवा किछि भी क्वेरीज अछि डू कांटेक्ट टू दिस नंबर एंड गेट द हेल्प नेक्स्ट same teaching examination of CBZ PCM and ASPS validity 1 year price is 1499 only just do contact to that number and जो माने पर्यंत सब्सक्राइब करिनो गाइस सब्सक्राइब करो and fast class समस्त को ପାଇଁ फ्री अछि जाई कि टिके चेक करो एप्लीकेशन डाउनलोड करो है ना at the rate रो मजा चली जोड अलगा टाइप रा नेक्स्ट बात बचारा photosynthesis takes place in which cell organelle photosynthesis हमर को सेल organelle रे अछि मते को photosynthesis कोठी प्रेजेंट रहउची obviously photosynthesis माने chloroplast that is carbon dioxide water help due to the presence of sunlight हमर कोन ना ग्लूकोज रे फॉर्म करे and as a byproduct oxygen release हो जाय this is a note chlorophyll is a trap sunlight हमें कहि परबा chlorophyll present थिबारु sunlight को trap करी कि leaf रे आनी कि दिए and leaf हमर कोन ना fruits convert करे yes or no yes ma'am चलो राइबोसोम हेले कोन कहउछ ना दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया कोन कहउछ ना मैम पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस हेले कोन कहउछ दैट सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करूछ सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करूछ क्लियर चलो नेक्स्ट को मते Which pigment is essential for photosynthesis? Repeat he gala na yes that is the chlorophyll repeat he gala sorry for that is chlorophyll guys carotene already तमनु कहिची yellow pigment को हमें कोन कहउचे ना मैम carotene कहउचे melanin skin color जो होची hemoglobin कोना ना मैम blood रो color red due to the presence of blood color होची कोन ना red due to the presence of hemoglobin melanin skin रो color by responsible carotene yellow chlorophyll present चलो next which gas is related to the during the photosynthesis देखो कौन क्वेश्चन पचारि छी आपण मानकू कौन क्वेश्चन पचारि छी एटा आपण मानकू बार बार कहि छी एमिति क्वेश्चन पचारिबो केमति आंसर दबो को मते which gas is released during photosynthesis हेठी मु जानि थिली @ बिरोजिन नंदिनी वेरी गुड गाइस राइट आंसर एही हबो कार्बन डाइऑक्साइड वाह तालिया hands off to you guys मु किछि कहि भी परिबिनी त मानकू सीरियसली किछि कहि परिबिनी माने दासे आइले मूल रुगा सात खंड रामायण सरलानी तमे माने जोठु की सेठी मते धिक मु तुमको पढौची तम मानकू धिक तम माने बुझी भी पारु अरे रिलीज कहि छी पा 50 थरो ए आजिरो क्लास रे 5 थरो इक्वेशन ता कहि सरलेनी कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू हमरा कोन ग्लूकोज बाहरुची देन ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट बाहरुची ओ प्रभु मते उठेई नियो एमान को पढे परिबिनी मु खाली क्वेश्चन आंसर तमे सुना तमे एक्सप्लेनेशन किछि सुनिबा एक्चुअली तमे डिजर्व करना किछि एक्सप्लेनेशन मु तमनु करिबी हैला किछि एक्सप्लेनेशन करिबी छाडी दियो क्वेश्चन पढुची आंसर कहूची चलो plants absorb water mainly through plant water absorb करे mainly through what मते को mainly through very good that is the roots एमिति ही कहि कि जी चलो आउ किछि ना स्टेम विषय कहबी ना स्टोमाटा ना लिप्स नेक्स्ट चलो which plant tissue transport the food को plant tissue हमरो ट्रांसफर करूची फूड को मते को which plant tissue ना हेडा भी किछि कहबी चलो phloem नेक्स्ट चलो which animal is known as sheep of the desert which animal is known as एमिति चलो चलो which animal is known as the sheep of the desert the largest mammal on the earth blue whale which blood cells are absent in frogs frogs रे को blood cell हमरा absent थाए frog रे को blood cell absent थाए मते को that is RBC without nucleus but RBC without nucleus that is nucleated RBC हमें कहूचे that is frogs are the amphibians that have the nucleated RBC in itself okay चलो मते को the study of fossils is called study of fossils कौन कहते देखो study of fossils are called what
मजा मस्ती सब गोटे साइड रे एते सीरियस नोट रे पढू जो मन को एते लेट नाइट जाए फिर भी तमन करे किछि केयर नहीं ना कि किछि ऑप्शन खुआ हबनी अनिता तमन एमती ही पढ कोन आ तमन कहबी रे इरिटेट लागुची तमन को सीरियसली राती रे जने माने संडे रे ऑफ न नै कि तमन को क्लास होची जस्ट बिकॉज़ कि एग्जाम तमरा 15 डेज आ रहिला स्टिल लुक एट यू गाइस व्हाट आर यू डूइंग हियर चलो so that is the paleontology कौन the study of fossil is the paleontology and हमें कहि बेटा study and the study of interaction of the organisms or study of interaction of the organisms कौन कहूचे that is the ecology study खाली organisms रो interaction को relate करा organisms को relate करा ecology okay here paleontology what is what the study of fossils and the ancient life forms that is the paleontology okay anthropology कहले कोन बुझछो ना स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन जते बेले ह्यूमन केबे ओरिजिन तांकर स्टार्ट हेतिला को एरिया रे ह्यूमन थिले नथिले हमरा कोन हरप्पा सहित रिलेट करूछे हरप्पा सहित रिलेट करो हमरा से ता सहित रिसर्च करके बाहर करछ ना केते पूर्व रो हमरा कोन ना हमरा पैलेलिथिक एज थिला नियोलिथिक एज थिला एडा सब हम कोठू ना मैम एंथ्रोपोलॉजी रो ही करूछे संघमित्रा रिलेट करके कहूची एक्सप्लेन ही करूची चलो तुम मैंने तो सुधुरीबनी मु कहीं बेकार जो माने भलो पिला भी अछंदी से माने तम चक्कर रे खराब हेबे राइट सेति में मु कहू चलो सो एंटोमोलॉजी कोन दैट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स नेक्स्ट Which vitamin is absent in milk? अच्छा मिल्क रे बहुत प्रकार विटामिन थाए बट द विटामिन इज एब्सेंट इन द मिल्क हमें कौन कहूचे विटामिन ए थाए ना नहीं यस मैम दिस इज प्रेजेंट इन द मिल्क विटामिन डी प्रेजेंट इन द मिल्क विटामिन B2 इज आल्सो प्रेजेंट इन द मिल्क नाही कोटा ना विटामिन सी नाही विटामिन सी नाही दैट इज एब्सेंट और वेरी लो इन मिल्क हमें कहि परिबा दैट इज इन्फेंट्स नीड फूड्स इन द विटामिन सी टू कोन सप्लाई ओके चलो नेक्स्ट वा देखो in which part of the plant does respiration occur respiration को part रे हमर हुए in which part of the plant does respiration occur respiration कोठी हुए मते को leaves रे बिल्कुल हुएनी all cell respire करे leaves रो तो हम रिलेट कोन करबा ना मैम all living cells what will be the right answer ना all living cells आसिला खाली a मारलनी a काई मारुछ रे a काई मारुछ respiration is the universal process in all living cells okay चलो next So the largest flower in the world is world रा largest flower हमें कहा को कहूचे मते कहिलो लोटस हमें जानचे that is the national flower of India ओडिसा रा हेले कोन कहूचो ना मैम अशोक हा ना नहीं सॉरी वाटर लिली ना अशोक गच्छटा हे जाउछ ना अशोक फूल राइट सॉरी ओडिसा रा अशोक फूल आसी जिवो यस चलो हां चलो राइट आंसर कौन हबो दैट इज द राफ्लेशिया व्हाट विल बी द राइट आंसर ना मैम राफ्लेशिया हबो दैट इज ग्रोन इन कोठिया ना हमरा साउथ ईस्ट एशिया रे हमरा अधिकटा मिले ओके चलो एंड एरा जदि हम कहिबा ना एटा अक्रॉस 1 मीटर रहउची तार एरिया स्क्वायर किलोमीटर कहबा जदि ओके चलो एंड वेरी लाइक स्मेल तार गोटे फाउल स्मेल थाए नेक्स्ट को व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट at the rate टिके गूगल कर दिले राफ्लेशिया मार दिले तुमको फूल देखा जीवा फूलटा भी देखेबी तुमको चलो which microorganisms is used in the production of alcohol production में कहा को ने मैम जे फर्मेंटेशन करे जे फर्मेंट करे सुगर रु अल्कोहल को सो कौन हबो ना मैम ईस्ट को कौन सुगर रु अल्कोहल इथानॉल प्रेजेंट थाए ओके चलो नेक्स्ट प्रोटोजोआ कौन करिवो ना दैट कॉजेस अ डिजीज लाइक प्रोटोजोआ डिजीज कौन अछि ना मैम malaria ओके बैक्टीरिया वायरस सहित किछि रिलेट करूछ हमरा कोन वायरस कमी जानछि दैट इज द पैथोजेन्स से अटैक करिवनी बैक्टीरिया दैट इज प्रोड्यूस हमरा कोन बैक्टीरिया सहित योगर्ट दही रे हमरा कोन को बैक्टीरिया थाई ना दही रे कोन प्रेजेंट थांदी ना बैक्टीरिया ही थांदी नेक्स्ट मतलब को व्हिच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड हमें को ऑर्गेनिज्म को कहूछे फार्मर्स फ्रेंड बटरफ्लाई द बिल्कुल हबनी बटरफ्लाई हमरा पॉलिनेशन को कराए राइट चलो नेक्स्ट कौन हबो ना मैम अर्थवर्म की हबो ना अर्थवर्म दैट इज द सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाए दैट इज बाय द बुरोइंग ऑफ द मिक्सिंग फूड्स ओके चलो मिक्सिंग ह्यूमस सहित नेक्स्ट
The green revolution in India is mainly related to, green revolution in India is mainly related to what? Now that is white and rice. जदि white revolution कहबो ताहाले आपण माने कहा सहित जिबे ना मैम मिल्क सहित जिवो मते कहलो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया रे हमर इंट्रोड्यूस किए करथिले किए करथिले ना मैम एम एस स्वामीनाथन केबे 1960s रे 1960s रे एम एस स्वामीनाथन को सहित रिलेट करिवो स्वामीनाथन को सहित रिलेट करिवो यस और नो वेरी गुड पल्सेस सहित गाइस रिलेट करिवो बहुत लेटर हेतिला सेटा पल्स रिवोल्यूशन सहित पळेबो देन ऑयल सीड सहित आपण माने येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड को सब बेले मन रखिबे एज द येलो रिवोल्यूशन यस और नो यस मैम मिलेट्स हेले कोथरे पळेबे ना मिलेट्स मैम श्री अन्न कैंपेन सहित रिलेट करिवो श्री अन्न कैंपेन मिलेट्स सहित प्रमोट हेतिला ओके चल नेक्स्ट मते को व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आयोडीन सहित रिलेट करूछ व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन गाइस आयोडीन डेफिशिएंसी रे कोन गोइटर को डिजीज ना मैम गोइटर डिजीज हुए आयोडीन डेफिशिएंसी रे यस और नो यस मैम एनीमिया कोन हुए ना आयरन डेफिशिएंसी रे एनीमिया हुए आयरन डेफिशिएंसी रे एनीमिया हुए नाइट ब्लाइंडनेस कोन ना मैम विटामिन ए रिकेट्स मैम विटामिन डी यस और नो चलो नेक्स्ट मते को व्हिच एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल हमें कहा को कहूची कहा को जानि छ एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल को काउ हैला दैट इज द वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड किया हो तो ओनली फ्रॉग द एम्फिबियन कैन नॉट रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर that's why hame ta kon ko body temperature changes with the environment that's why they consider as the cold blooded animal okay chalo next mate ko BCG vaccine is given to protect against BCG vaccine hame kahi ki douche BCG vaccine is given to protect against what kaha against douche polio against hame kon na oral polio vaccine douche polio ओके एक बूंद पोलियो राइट सो नेक्स्ट कोन हबो टीबी हमें दोछे कि यस मैम बीसीजी अगेंस्ट हमें ट्यूबरकुलोसिस दैट इज द बैसिलस कोन तार फुल फॉर्म कोन रहउची कहलो मते को बीसीजी रा फुल फॉर्म कोन ना मैम दैट इज द बैसिलस कैलामेट गुरिन कोन बैसिलस कैलामेट गुरिन हमें ताके कहउचे दैट इज द बीसीजी एंड गिव कहि परिबा गिवन एट द बर्थ एंड प्रिवेंट टू चाइल्डहुड लाइक चाइल्डहुड टीबी को स्प्रेड न हेबा पाई बाथ टाइम रे ही हमर ट्यूबरकुलोसिस पाई बीसीजी टिका दिया से यस और नो यस मैम मलेरिया नॉट बीसीजी दैट इज मलेरिया प्रिवेंटेड बाय द मस्किटो कंट्रोल कोलेरा भी तो हबनी दैट इज द ओरल कोलेरा वैक्सीन हमर दिया जाए नेक्स्ट चलो नेक्स्ट मते को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज ड्यू टू हमर जो प्रोसेस रे जने देखो सतीश भाई समटाइम्स ना हमर वैक्सीन तो हमें नहीं जाए बट से हम बॉडी रे सेति की इम्यूनिटी डेवलप करि पारि न थाए तो इम्यूनिटी समहाउ हमर कन कैंसिल भी हे जाए तो कहा बॉडी रो कोन लाइक मेटाबॉलिज्म ता अकॉर्डिंग बीसीजी सेटा पुन बीसीजी नेला परे पुनी चेक करिया कथा कि वेदर एटा सक्सेस हेइ छि ना नाही सेति पय so the process of conversion milk into curd that is the lactic acid bacteria कोन ना लैक्टिक एसिड द्वारा हेइ थाए एंड यदि लैक्टिक एसिड भी न थाए कि बैक्टीरिया खाली थांदा ताहले बैक्टीरिया ही राइट आंसर मारथांदा राइट यीस्ट हेले यीस्ट सहित आपण माने कोन ना मैम अल्कोहल प्रोडक्शन रे हमें ताको रिलेट करि परिबा वायरस हेले हमें कोन ता वायरस सहित जीवनी फंगी सहित भी जीवनी नेक्स्ट मते को व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स वाटर अच्छा वाटर सहित जाइलेम एंड फ्लोएम जाइलेम हेले कोन देखो फ्लोएम फॉर फूड तो फॉर को रिलेट कर देलो फ्लोएम सहित रहिला के जाइलेम को रिलेट कर दबो वाटर सहित तो राइट आंसर कोन मैम वाटर सहित कंडक्ट करूची जाइलेम यस और नो सो कैम्बियम कोन हबो ना दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट फॉर्म्स द जाइलेम एंड फ्लोएम नेक्स्ट वो कॉर्टेक्स कोन हबो दैट इज द जनरल स्टोरेज टिश्यू नेक्स्ट व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस द रिकेट्स एबे कहितली विटामिन को डेफिशिएंसी रिकेट्स होची ना मैम विटामिन डी कहारो डेफिशिएंसी रे मैम विटामिन डी ए बी सी डी आर द कॉमन ताकू टिके केयरफुली मने रखि दियो द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड कह मते बर्ड्स रो स्टडी को हमें कोन कहूचे जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स गाइस yes or no so study of bird is what that is the ornithology the branch of zoology
The branch of zoology that study of the birds is the ornithology. Yes or no? Yes ma'am. मते को famous Indian ornithologist कहा को आपण जानि चंती? Famous Indian ornithologist कहा को आपण जानि चंती? हाँ प्रभात राइट कोविड थियरी हुए सो आमे कहा गुना मैम सलीम अली को सहित रिलेट करिवो ही वाज द फेमस ornithologist. Okay, next what is हमर कोन that is the ichthyology. मते को ichthyology कहा को कहउचे ना study of fishes. Ichthyology guys it is the study of fishes and botany जानि छ that is my department plant science. Okay, चलो next. The mosquito anopheles transmits. Mosquito anopheles हमर transmit कौन करे? Anopheles mosquito आसिला माने आपण माने आखि बंद करिकि मलेरिया कहिबे. आखि बंद करिकि मलेरिया कहिबे. That is a parasite plasmodium. Clear? Dengue हेले कौन कहउछ? ना that is the Aedes कौन? Aegypti. Aegypti that is the dengue. Then chikungunya कोथि पई हुए मते को? चिकनगुनिया गाइस काहे हुए ना ए स्प्रेड बाय द एडिस इजिप्टी भी चिकनगुनिया स्प्रेड कराए देन को येलो फीवर कोथरे हुए ना एडिस ओनली एडिस द्वारा हमर ओनली एडिस मस्किटो द्वारा येलो फीवर हुए जॉन्डिस चलो नेक्स्ट मते को सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क हमर कोठो ऑब्टेन्ड हेची मते कहलो सिल्क इज ऑब्टेन्ड ऑब्वियसली सिल्क असले माने सिल्क और मुरु ही हबो ना सिल्क और मुरु हबो जदि ऊल पछारा गला ताहाले आपण माने कोन ना मैम सीप सहित रिलेट करिवे हां चिकनगुनिया भी हबो चलो नेक्स्ट मते को व्हिच डिजीज इज नोन एज द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी जो डिजीज हुए ताको आपण माने कोन कहिबे दैट इज हीमोग्लोबिन दैट मींस आपण कहि परिबे आयरन डेफिशिएंसी रे सेटा हुए दैट इज द कोन एनीमिया. Anemia will be the right answer. That is low hemoglobin due to the iron deficiency हुए. The symptoms रे आपण मानकर fatigue आसी जाय, weakness आसे, rickets आछन vitamin D. हमरा ए जो कहला protein deficiency रे क्वाड्रिसोकर हुए. कोन ना मैम sorry that is the क्वासियोकर हुए कोथ भाई ना मैम that is the protein deficiency रे. कोथि रे ना protein deficiency रे हुए. goiter आपण माने जानि छन कि कोन iodine deficiency रे. चलो ओके नेक्स्ट अरे एते जल्दी पळे आसला ओके सो गाइस 3499 रहउची प्राइस 1.5 ईयर रहउची वैलिडिटी प्राइस 3499 एंड इथरे आपनकर सब वन डे एग्जामिनेशन कंप्लीट हे जेबो कांटेक्ट नंबर एटा किछि भी क्वेरीज अछि बस तुम माने कांटेक्ट नंबर को कॉल करो एंड गेट द हेल्प सेम थिंग फॉर द टीचिंग आल्सो सेम फॉर द टीचिंग नेक्स्ट कोन टे ब्रेक नेबा थैंक यू को खुशी रे थैंक यू आहुरी 50 टा अछि ना एबे तो मो क्लास टाइम स्टार्ट हैला रे गाइस एबे तो कौन कहूच मोर क्लास 11 रे सरे तुम माने एबेटू थैंक यू कहूच मोर हार्ट ब्रेक कर दोच तुम माने गोटे 5 मिनट ब्रेक नियो देन विल रिज्यूम द क्लास गोटे पॉज गोटे 5 मिनट ब्रेक देली जाओ जीरो अपनी जिंदगी कहार बाहागर हैला कहार प्राण बाहरी गला अच्छा हां हां केडी सांग लैंग्वेज रे कहार प्राण डाठी बाहरी गला ठीक कहलो कहार प्राण डाठी बाहरी गला आगु को जीवा ठीक कहलो 10 मिनिट ब्रेक अल्बर्टो ठीक अधिक ब्रेक हे जाउची मते तो लागुची अल्बर्टो बोधे स्टार्टिंग रु क्लास रे नाही राइट से मझिरे मझिरे आसुची गोटे आंसर दे दोची जोड़ा देखुची तापर पुन पळोची कोन पाकिस्तान रो मैच चलची बा अरे सूर्य टिके तो रुह गोटे 2 मिनिट तो दियो काई एंदी होच 2 घंटा हे गला ब्रेक भी टिके दबनी एते निर्दय तम माने मैम को देखि दया भी लागुनी हेई कौन पिला खसी गलो कहार प्राण बाहरी गला की पळेला मैम खाई छंती आपण हां हां रश्मि मु खाई पी के पूरा खाई की लाइक लेट रे लंच करथली 5 अराउंड बोधे लंच करथली तो डोंट वरी ना ना 4:30 रे लंच करथली आज जीवा बोमा बोम हबो अरे एबे तो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज उडा जोडा कि आपण डे टू डे लाइफ रे जनरल थिंग उडा दिस आर द इंपोर्टेंट
नेक्स्ट चलो स्टार्ट करिबा नल तुम मानकर सप्ताह प्राण पळेबो हे देखुना कोडे 25 पिला पळेलेनी 25 पिला कोडे पळेलेनी कोन तुम मानु कहिबि रे ओ इरिटेट करछो चलो सो व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर अच्छा ब्लड प्रेशर मापिया पे हमें को डिवाइस यूज करछे ना मैम दैट इज द स्पिग्मोमैनोमीटर कोन दैट इज द स्पिग्मोमैनोमीटर हम यूज करूछे जदी टेंपरेचर पछारा गला ताहाले आपण माने टेंपरेचर सहित रिलेट करिवे थर्मोमीटर को एंड हम कहले स्टेथोस्कोप कोथि पई ना मैम हमरो लिसन द हार्ट बीट टू लिसन द हार्ट बीट मापिबा को नहीं जस्ट टू लिसन द हार्ट बीट लिसन द हार्ट बीट ओके चलो बारोमीटर हेले कोन हबो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर atmospheric pressure guys okay चलो next question मत देखो next question heart beat listen हाँ म देवाशीष तमे जो सॉरी देवदत्त तमे जो एमिति कान रखी सुनुथला हार्ट बीट धन सत्य तमे मते भल पाउछ ना नाही एमिति मिछरे रियली यू लव मी ना से जो पचारुछ तापर हार्ट बीट सुनुछ एटा सेटा चलो so the gas used in refrigerators is the gas used in the refrigerators used that is what refrigerators रे जो gas हमर यूज हुए गाइस ऑक्सीजन फ्रियन नाइट्रोजन और हीलियम गाइस कहा को ना ये फ्रियन को हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोली हमें जानिचे द सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिति क्वेश्चन आसीबो फ्रियन ना आपण माने सुनि नथिबे छाडी देके आसीबे दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन okay yes that is the chlorofluorocarbon nitrogen guys nitrogen used in the food packaging कहि दिली आगरो right relate करिबा helium सहित balloon को relate करिबा next म देखो which metal is used in the making coins along with the copper guys कहि दिला एरा बहुत जनरल साइंस एटा तुमको निहाती दरकार हबो एग्जाम रे एथरू 2 मार्क आसीबाटा सुनिश्चित चलो आमे टिके गप्पंतु 100 पिला आसी जिवे एबे कोन गप्पिले 100 पिला आसी जिवे दरकार नै 100 पिला पढा पिला मो पाखरे 50 रहंतु दैट्स एनफ गप्प पिला मते जणे भी दरकार नै चलो which metal is used to making coins along with the copper कहां से रिलेट करछ ना दैट इज द जिंक that is guys what that is the zinc that is used with the copper and brass मिसी के हमर कोन ना coins एला other utensils एला एउडा हमर तयारी हुई yes or no yes ma'am potassium sorry sodium सहित कहा को रिलेट करियो कहलो that is very soft that is highly reactive and हमें कहि परिबे that is not for obviously coin पाइन हो and हमें कहिला potassium सहित रिलेट करछे that is very soft potassium very soft and हमें कहि परिबे this is explosive with the water potassium को water सहित मिसेले कोन हबो ना गोटे explosive nature आसी जीवो then calcium already तो मान जानिछो that is not used in the coinage also calcium हमर बॉडी को दरकार next को which fuel is known as the CNG रे हमें को fuel दरकार सतीश भाई ए मु तुमरा सीए को टिके ब्लॉक करला मु तुमरा सीए को टिके सतीश भाई ब्लॉक करला लास्ट को गप्पीबा छाड़ which fuel is known as CNG कहा को हमें कहूचे that is the compressed natural gas what is that is the compressed natural gas okay very good चलो next that is eco friendly guys compressed natural gas CNG आपण मान जानि संदी that is considered as the हमर कोन ताकू हमें eco friendly fuel बोली यूज करूचे that is mostly methane हमें पाउचे and vehicles हमर यूज होचे okay that is pollution को reduce करिबारे हेल्प करे clear producer gas हमें का कहूचे कहलो the mixture of the carbon dioxide and nitrogen oxide कोथरे गैस को बाहर छे तेले carbon dioxide plus nitrogen ताकू मिसी के हमर produces the gas clear चलो next which acid is present in tomato रे हमर को acid present अछि मते कहिलो टमाटो रे को acid present अछि टमाटो रे को acid present अछि that is tartaric acid को acid that is the tartaric acid हमने सुथो ना टॉर्चरिक एसिड भला लागुची नॉट ए टार्टारिक एसिड सो एटा कोन ऑक्सैलिक एसिड मारलनी ऑक्सैलिक एसिड ऑप्शन भी तो मानकर अछि ऑक्सैलिक एसिड कोड आसिला that is the tartaric acid that is found in tomato turmeric and हमें कोथरे ना ग्रेप्स से भी पाउचे कोथरे टमाटो turmeric and कोथरे ना मैम आ कोथरे ग्रेप्स रे ग्रेप्स पाउचे एसिटिक एसिड कहले कोन बुझुचो ना मैम विनेगर रे कहिची ऑलरेडी साइट्रिक एसिड हेले कोन बुझुचो हां इमली
कइया ओके चलो citric acid कहले कोन बुझो that is the citric fruits and lactic acid only in the sour milk next which device is used to measure the earthquake intensity को device हम use करछे earthquake रा intensity को measure करबा लागि tell me please चलो that is the seismograph केते ना मैम seismograph very good so records the magnitude and the duration of the earthquake that is हमर कोन ना ये को richter scale हम यूज करछे कोदिरे ना मैम seismograph is used in the richter scale yes or no yes ma'am hydrometer सहित कोन रिलेट करथिली ना मैम that is measure the specific gravity of the liquid कोन ना मैम gravity of liquid then एठी H for hygrometer H for humidity कहितला नाही yes ma'am then altimeter guys ultimately altitude ही मापुथो altimeter altitude is that clear चलो next मते को the artificial sweetener saccharin is artificial yes artificial sweetener हाँ हाँ oxalic acid भी हबो काई एमि दोचरे oxalic acid भी हबो टमाटो रे ऑप्शन ए नथिला बोली तुमको कहिली चंद्रशेखर very serious पिलाटा तमे हां चलो so the artificial sweetener saccharin हमें यूज करूछे for the organic compound कोदरे ना मैम non calorific sweetener हमें ताकू कहूछे जोटा कि हमर कोन ना मैम डाइट कोक रे हमर रहूची that is the artificial sweetener yes contain the non caloric sweetener clear चलो next मते को the process of coating iron with zinc to prevent the rusting is the process of coating iron with zinc to prevent the rusting is what galvanization anodizing electroplating or alloying 50 थरा एटा 3 थरा repeat different modify करी कहूची okay that is the galvanization कोन galvanization is the zinc coating iron and हमें कहूचे that is prevent कोथि पई ना corrosion पई करे anodizing कोन कहली that is aluminum oxide coating होची electroplating that is the coating with the metals clear चलो next मते को which gas is used in the fire extinguisher रे जो नाली आपनकर थाय सिलिंडर अमानिया बाघ कोन तमर मैरिज हे जाईची बोली सोनल चारियाडे स्प्रेड करची सतना मिछ पार्टी दियो हम पिला मांगजोनी दियो so which gas is used in fire extinguisher oxygen nitrogen carbon dioxide or hydrogen that is carbon dioxide used as a fire extinguisher bhabere that means that is cut off करे oxygen supply को that is smooth करे fire को and all of sudden ना slow down करती yes or no and जति कहबा flammable and dangerous is what ना hydrogen so this is the flammable and also dangerous yes or no yes मिछना मु भी भाबुथिली कोन यार सोनल पंडित प्रवर चलो काई तनर मिछ कहउछ so which substance is known as liquid gold हमें कहा को कहउछ obviously guys gold भलिया costly जे हेथिबो gold भलिया costly जे हेथिबो ताकू ही तमे कहिबा ना मु जानि छी भक्त बंधु मु जानि छी बागर रियल ना कोन मते सुखाउनी बुझिला so को that is the kerosene petroleum or diesel or mercury that is guys petroleum कोन ना petroleum हमें ताकू कहउछ clear हाँ diesel हबा कोन that is the petroleum fraction okay next मते को which glass is used in making the spectacles theory रे हमर को गैस को हमें यूज करछे मते कहिलो अच्छा बुझिली तम मानकर काई ता संग लागु चरे हाँ which glass is used in making spectacles तैयारी करी बारे yes that is the flint glass यूज हुए ए जो pyrex हमर यूज हुए pyrex ता कोथि पे यूज हुए को ना हमर जो heat resistance glass आपण मान देखि चंदी आज काली कोन केटल आसिलानी एबे हमर कोन ना मैम बहुत सारा लाइक कोन कुकिंग यूटेंसिल्स आसिलानी ग्लास रो सेटा कोथि तैयारी ना pyrex रे तैयारी सो आपण मान मन रखो that is the heat resistant glass okay laboratory रे जो हमरा यूज हुए chemical यूज करिया को बोरोसिलिकेट ताकू कोन कहि परिबे ना मैम बोरोसिलिकेट
क्लियर देन कहले क्वार्ट्ज ग्लास सहित हमें कहा को रिलेट करूची मते को क्वार्ट्ज ग्लास सहित कहा को रिलेट करूची ना मैम दैट इज जदी पचरा गला व्हिच ग्लास इज मेड फ्रॉम सिलिका कोटा ना मैम ए क्वार्ट्ज ग्लास दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट ना मैम सिलिका रे तयारी ओके दैट इज विथस्टैंड विथ द हाई टेंपरेचर यूवी रेजिस्टेंस आल्सो हमर कोन क्राउन ग्लास कहले कोन बुझिसे को हां इंडक्शन स्टोव रे को ग्लास यूज हो जेटा टफेंड ग्लास सेटा हीट शीट सदा किछ नै दैट इज जस्ट अ टफेंड ग्लास okay that is a quartz glass सहित भी related quartz glass सहित सेटा हैला crown glass कहले that is transparent and low dispersion glass को हमें crown glass कहछे next मते को the hardest part of the human body is hard जो हमरा human body रो hardest part जदी hardest organ माने हमरा कोन कंपाउंड के कहले आपण माने डायमंड को रिलेट करछो ह ना नहीं मते को hardest part कोटा ना हमरा दांत ह ना नहीं दांत सहित हमें कहछे कोन ना enamel that is the हमरा कवर करके रखुची दांत को टूथ एनामेल हमें कहूचे राइट सो कवर्स द टोटल टीथ दैट इज द एनामेल दैट इज द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट इज रेजिस्ट द वाटर रेजिस्ट वाटर नहीं माने हमर कोन रेजिस्ट करे वेयर करिबारे दैट इज द एनामेल नेल हैला नेल गाइस केराटिन केराटिन सहित नेल को रिलेट करिवो दैट इज सॉफ्टर देन द एनामेल ओके वेरी गुड चलो cartilage is a flexible tissue this is a flexible tissue okay a bone ta apan man janchandi au chalo next mate kuha which device converts the sound energy into electrical signal acha gote device nail hair keratin are ba surya tame pona chiyo surya must be chiyo ta bote ette keratin treatment bisare idea achi au chalo so which device converts the sound energy into electrical signals that is what एंटोलिना एंटोलिना एते जोरे हसिला एंटोलिना रो सेटा गोटे फेक आईडी एंटोलिना दी दीटा मोबाइल धरि की गोटे सूर्या है की गोटे एंटोलिना है की चैट करू जानि गली तो व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स द साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल का सदा हम रिलेट करछे ना साउंड एनर्जी को मैम इलेक्ट्रिकल सिग्नल फर्स्ट साउंड आसीबो कोठी ना माइक्रोफोन रे देन कन्वर्ट करबो कोन ताकू ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे यस और नो यस मैम स्पीकर हेले में कोन कहूचे ना दैट डज द रिवर्स लाइक इलेक्ट्रिकल टू साउंड हेले स्पीकर कहबो इलेक्ट्रिकल टू कोन ना मैम सिग्नल सॉरी साउंड ओके ट्रांसमीटर कौन करूछ मते को ट्रांसमीटर हेले कौन कहबो मते को ना मैम दैट सेंड्स द सिग्नल्स ओवर द डिस्टेंस हमें कौन कहबा दैट हमें रेडियो हेला रेडियो जोथरे ट्रांसपोंडर यूज हुए जोथरे डाउनलिंक हुए डाटा अपलिंक हुए डाटा देन ड्यू टू द ट्रांसपोंडर पुन सारे माने डाटा को आगे अपलिंक हे जाए देन सैटेलाइट थ्रू रे पुनी को डाउनलिंक हुए बट सेटा की करे ना ट्रांसपोंडर्स देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसपोंडर्स सुडा को हमर कोना मैम फ्रीक्वेंसी करी के दिए ओके सो एम्प्लीफाई करे ए एम्प्लीफायर भी ताको रिलेट करिवो का सहित ना सिग्नल को स्ट्रेंथन करे सिग्नल को इंक्रीज करे कि एम्प्लीफायर ए ट्रांसपोर्टर सहित एम्प्लीफायर कनेक्टेड थांती नेक्स्ट मते को व्हिच रेडिएशन इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड Which radiation is used for sterilization of food? Give me the right answer. Right answer जल्दी दियो जति के गपुचो क्लास रे पाठ साटा किछि नाही बर्बाद दळ चलो राइट आंसर कोन हबो दैट इज द कोन UV rays X rays microwaves कोन हबो ना मैम दैट इज द UV rays कोन हबो UV rays हां ऑप्शन डी आसी गला ना आ किछि ऑप्शन डी आसलानी माइक्रोवेव्स कोन पछछि कन्वर्ट करूछि सॉरी व्हिच रेडिएशन इज यूज्ड टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ द फूड स्टेरिलाइजेशन कथा पचारिछि जे के हमर बैक्टीरिया मारे ना ता सहित रिलेट करिवो यूवी रेज ही हबो कारण से हमर बैक्टीरिया को मारे जर्म्स को मारे एंड वाटर प्यूरिफिकेशन में यूवी रेज रिलेट करछे फूड स्टेरिलाइजेशन में भी यूज करछे का यूवी रेज को माइक्रोवेव्स आसी गले माइक्रोवेव्स रे खाइबा तयारी करछो रे मूर्ख दळ कोथरे ना माइक्रोवेव्स रे खाइबा तयारी करछो तम माने हां आसिले माने इंफ्रारेड सहित कोन रिलेट करूछो ना मैम रिमोट कंट्रोल सहित रिमोट कंट्रोल हैला हीटिंग हैला ता सहित रिलेट करूछो एक्स-रेज कोन करूछो ना मेडिकल इमेजिंग रे एक्स-रेज तयारी करूछो चुल्ली गैस ना नेक्स्ट को व्हिच गैस इज रिस्पांसिबल फॉर द स्मेल ऑफ rotten eggs अंडा पाची नहीं अंडा पची गला पर गोटे माने विकृत स्मेल आसे से स्मेल टा को गैस एक्चुअली कहला मते और हमें कहि परिबा से गैस रो स्मेल टा अंडा पचिला स्मेल सहित समान
अंडा पचिला सहित समान दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड कौन हाइड्रोजन सल्फाइड वेरी गुड गाइस वेरी गुड हाइड्रोजन सल्फाइड विल बी द राइट आंसर यस 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 कार्बन डाइऑक्साइड केबे होबनी कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑर्डरलेस कहि दउ जाकुआ ओके चलो जदि पंजेंट स्मेल आपन को पचरा गला कोन पंजेंट स्मेल पचरा गला जानि थांदु यदि पंजेंट स्मेल पचरा गला ताहाले आपण माने अमोनिया सहित कनेक्ट नेक्स्ट which element is commonly used in the fluorescent lamp अच्छा fluorescent lamp रे हमर को एलिमेंट आछ कहला which element is commonly used in the fluorescent lamp रे हमर गुड एलिमेंट यूज हुए what is that exactly tell me which element is commonly used in the fluorescent lamp that is the argon काहे की कारण argon रे फिलामेंट तयारी हुए कहितली इलेक्ट्रिक बल्ब भीतर argon तयारी हुए that's why हमर हीट को कोन कैप्चर करी रखि पारे that is the inert gas and that used to prevent the filament oxidation clear neon हबनी neon is d कोन neon is a decorative sign lamps हम कहि परिबा neon lights हम यूज करछे but lamp नहीं हैला helium is the कोन that is used in the balloons that is the lightest gas चलो next which chemical is commonly used as antiseptic भाबे रे हमें गोटे chemical को यूज करछे what is that exactly tell me which chemical is commonly used as an antiseptic भाबे रे हम यूज करूछे yes that is the dettol को हम यूज करूछे widely used as the antiseptic in the households clear very good ए सोडियम क्लोराइड को हमें कोन जानि छै मैम this is the common salt this is common salt sugar को ऑलरेडी sugar जानि छ चलो नेक्स्ट बा अल्कोहल को हमें डिसइनफेक्टेंट रे यूज करू छे यदि डिसइनफेक्टेंट पछरिला ताहाले आपण माने कोन अल्कोहल को यूज करि परिबे हैंड सैनिटाइजर रहेला डिसइनफेक्टेंट रहेला एडा आसी जबो डेटॉल ले किंतु कोन ना मैम दैट इज केमिकली एंटीसेप्टिक रे यूज करा जाय नेक्स्ट which type of mirror is used by dentist माने गोटे मिरर यूज करन देखि छ तो आंगर जबा काच सो से मिरर रे कोन यूज हुए मते को से मिरर रे से माने कोन यूज करंती को कनकेव श्योर अरे वाह वेरी गुड सो आमे कहि परिबा कन्वेक्स मिरर कोन दैट प्रोवाइड्स ए डिमिनिश्ड इमेज yes or no yes ma'am and useful for the कोन like our dentist माने ताकू यूज करंती नाही okay very good so right answer कोन हो that is the concave mirror what will be the right answer that is the concave one that allows the dentist to see the all the small cavities clearly yes or no yes ma'am next चलो मते को which gas is used to fill the balloons filling पई को gas use हुए एबे कहितली balloons gas पई ma'am helium there is no need of any explanation clear that is preferred कोथि पे करा जाय ना that over the hydrogen for the safety कारण हमें जान छे हाइड्रोजन होची हमर सबुटू स्मॉलेस्ट हमर सबुटू लाइटेस्ट गैस अरे सुना मते टिके कहिलो तमे माने कंसीडर करूछो हाइड्रोजन को हीलियम को काई कंसीडर करछो लाइटेस्ट गैस जोटा तमे मानु कहितली क्वेश्चन को नंबरटा अछि टिके चेक करिबा लाइटेस्ट गैस तुमको पीडीएफ प्रोवाइड करबी लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन को ही कंसीडर करिवो जस्ट बिकॉज़ हमें कहूचे हाइड्रोजन इज नॉट दैट सेफ कारण हमें जानिचे हाइड्रोजन इज कोन जल्दी जल्दी निया को भी धरि दिए दैट्स व्हाई हमें कहिबा हीलियम हम यूज करूचे बट एक्चुअली लाइटेस्ट होची हाइड्रोजन गैस भी गाइस गैस भी हमर लाइटेस्ट होची माना हीलियम टू कारण हाइड्रोजन ता परे तो हीलियम ना जस्ट बिकॉज़ बलूननेस फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशन पई हम हीलियम यूज करूचे हां सो ताकू रिलेट करके टिके चेंज कर दबो पछरे पुनी कमेंट सेक्शन में मते जणैबनी कि मैम एटा भूल थिला प्लीज ताकू चेंज कर दबो ओके प्लीज गाइस हां मैम आपण से ट्रेंड इमेज बाघ यार क्लास रे फोकस करो चलो नेक्स्ट मते को द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी सहित कोन रिलेट करथली एच फॉर ह्यूमिडिटी एच फॉर हाइग्रोमीटर बारोमीटर दैट इज मेजर द प्रेशर आपनकर मेजर करूची की ना मैम बैरोमीटर यस ना नहीं को प्रेशर माने को प्रेशर कुकर हां प्रेशर कुकर नहीं मैम दैट इज एयर प्रेशर ओके एयर प्रेशर से रिलेट करिवो थर्मोमीटर टेंपरेचर एनीमोमीटर कोन कहि दिल ना मैम यूज तो कोन विंड र स्पीड गाइस एबे के ओडिया रे लिखि देखिबा केमति लिखि होछ ना नहीं yes
हाँ कि बालीजात्रा रे हो सो व्हिच विटामिन इज आल्सो नोन एज राइबोफ्लाविन राइबोफ्लाविन भाबरे हमें को विटामिन को जानि छे मते कहला B12 को हमें कोन जानि छे ना दैट इज द सियानोकोबालामिन B12 को जदी पचरा गला ताकू आपण माने कोन आंसर मारिबे दैट इज द सियानोकोबालामिन clear then right answer कोन हबो दैट इज द विटामिन B2 विटामिन B12 को गाइस रिलेट करिवे ओके विटामिन C ascorbic acid विटामिन D कैल्सीफेरॉल भाबरे सुनिथिबो केबे केबे ना कोन कैल्सीफेरॉल मेडिसिन रे यूज हुए ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को which part of the LPG cylinder has the smell added to the detect leakage लीकेज जते बेले हबो हमें जानि परिबानी कारण गैस रे एग्जैक्टली कोन जॉब प्रेशर तमर बापा माँ आउ तम गर्लफ्रेंड जो झील मान बॉयफ्रेंड से तमर जॉब प्रेशर को मापिया काफी तो व्हिच पार्ट ऑफ एलपीजी सिलिंडर गाइस देखो हमर सिलिंडर रे जो गैस हमें आसुचे हमें जोटा जाळुचे एलपीजी तार एक्चुअली रे सेटा ऑर्डरलेस जस्ट बिकॉज़ कि लीकेज हेले हमें जानि परिबानी दैट्स व्हाई हमर सेतरी कोन ऐड हेथाय ना मैम इथाइल मर्सेपेटेन ऐड हेथाय कोन ना इथाइल मर्सेपेटेन ऐड हेथाय जस्ट एडेड एज अ ऑर्डरलैंड फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशन यस ऑप्शन सी बिल्कुल है विटामिन्स सॉरी ब्यूटेन ऐड हेसी ब्यूटेन बिल्कुल नहीं गाइस ब्यूटेन नहीं butane होची कोन that is the main component of the LPG butane is considered as the main component of LPG जोथि पई हमर कोन निया जळे that is the odorless butane ही हमर odorless and a butane सहित हमें इथाइल को मिसौचे इथाइल मार्क पेन को यूज करूचे just because to know whether it is leaking or not okay चल next मते कुआ which metal is used in the thermometer रे को metal यूज करा जाय कहिथिली that is आखि बंद करिकि mercury because that expands the uniformly with the temperature and guys high boiling point and visible भी देखाय clear or not clear very good zinc सहित आपण माने कोन कहिथिली ना मैम galvanization को यूज करिवे clear जीवा next very good copper तो wiring रे जानि छ लीड त आपण माने जानछन बहुत सारा जिंस रे यूज होना नहीं light को गैस अछि so which is the most abundant metal in earth रो crust रे हमें abundantly को metal को पाई पारु छे that is very rare हमें कहि परिबा that is very rare only 8% guys हमें aluminium पाउचे only 8% पाउचे important ore aluminium रो किए ना मैम bauxite हबो right answer very good next चलो and second most abundant कहिबे that is iron ये होचे हमरा second most abundant iron okay चलो next buffering होची बिल्कुल buffering होनी राजू बिल्कुल buffering होनी don't create the spam बिल्कुल buffering होनी राजू यार आंसर दियो So which acid is used in car batteries? Car batteries रे हमर कोन यूज हुए ना मैम that is the sulfuric acid. That is what ना sulfuric acid H2SO4 हमें ताकू कहउते that is a strong acid used in the कोन ना lead acid batteries. मन रहबा कि मन रहबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोथि आसीबो ना मैम यूज इन द इंडस्ट्री एंड हम पेट भीतर जो अछि HCl कोन ना मैम डाइजेशन रे हेल्प करूछि तमे मानका आखी कोन बे सागुना आखी ना चिल्लो आखी चलो एसिटिक एसिड विनेगर नाइट्रिक एसिड कोन एक्सप्लोसिव एंड फर्टिलाइजर्स रे यूज नेक्स्ट मते को अगेन कहू जा 25 टा क्वेश्चन अछि डोंट वरी सॉरी जीवा जल्दी 3499 वैलिडिटी 1.5 ईयर या भीतर आपनकर सीजीएल बैच भी आसीबो आरआई अमीन भी बैच आसीबो किछि भी एंड 1.5 ईयर भीतर जे कोनसी एग्जामिनेशन आपनकर गाइज आसीबो ताटा कवर हिजबो ए नंबर को कांटेक्ट करिकि बैच को जॉइन हे परिबे
Next guys, Vedang teaching भी same thing, validity 1 year, price just only 1499. Arts रो PCM रो या CBZ रो आपण माने कौन सब वाला वाला हो रे पागल दल आमे देखो देखो प्रभांकर केते बढ़िया क्वेश्चन गाइस के जानि छ कि क्वेरी तांग सॉल्व करो आमे जदी जिंक खाई देबा पेट रे हाइड्रोजन क्लोराइड मिसी की पड़ गला रे पळेला ऊपर को एडा पळेला कोन खोजले पाइबेनी एडा आसुनी किछि भी क्वेश्चन पचाचा मते को द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन डोंट गेट लाइक सीरियस एकिटी पढा ओके चलो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट हमें काहू कंसीडर करूछे ऑप्शन बी दैट इज द आर्यभट्ट मते कहले आर्यभट्ट गाइस कोठू लॉन्च हेतिला ना मैम ये 1975 रशिया रू या सो इट इज 1975 रे कोठू ना मैम रशिया रू ये लॉन्च हेतिला यस और नो yes ma'am and हमरे जो भास्कर रहउची कोन ना बहुत लैटर ऑन हेतिला एंड एटा गोटे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भाबे कोन लॉन्च हेतिला ओके एंड फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट हम का ना मैम आर्यभट्ट को कंसीडर करूछे इनसैट 1A कोन ना इनसैट रहउची हमर 1982 रे लॉन्च हेतिला दिस इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज द हमर कोन 1982 रे दैट इज इनसैट communication satellite yes rohini guys kon achi na lost that letter from the indian launch vehicles that is the rohini indian ru rohini jaithila okay but ussr ru aryabhat next mate ko isro's chandrayaan 3 successfully landed on which part of the moon acha important achi mate ko part re amara moon ro isro ro chandrayaan launch heichi guys in amara isro ro chandrayaan india sorry moon ro ko part रे ना दैट इज द सक्सेसफुली साउथ पोल रे कोठी ना मैम साउथ पोल रे इंडिया रहउची फर्स्ट कंट्री जे की सॉफ्ट लैंडिंग करि पारछि यस ना ना यस मैम द हिस्टोरिकल अचीवमेंट हमर केते हेतिला ना मैम 2023 रे हेतिला हो ना नहीं 2023 रे हेतिला दैट इज इंडिया फर्स्ट टू लैंड द नियर द लूनर साउथ पोल यस नो चलो इक्वेटर पाखरे गाइस नहीं यूएस रा अपोलो मिशन यूएस रा अपोलो मिशन इक्वेटर पाखरे लैंड करितला याको मन रखि था यूएस रा अपोलो मिशन ओके चल नेक्स्ट बा वेरी गुड चल हां एटा गाइस डार्क साइड रे मून रा डार्क साइड रे के लॉन्च हेतिला ना जो हमर कोन अछि कहले चांग ई4 चाइना रो चांग ई4 ताकू मन रख सी हमर डार्क साइड रे लॉन्च माने कोन लैंड करथिला साउथ पोल इंडिया इक्वेटर यूएस चाइना डार्क साइड तीनटा मन रख परिबो वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन इंडिया वाज फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इंडिया रे कोटा मते कहिलो इंडिया रे पचारि छी जदि ग्लोबली पचारिला ना गाइस ताले ब्रेन को मारिबो जदि ग्लोबली पचारिला ताले ब्रेन को मारिबो एंड ए ग्लोबल वायरस फर्स्ट ग्लोबल वायरस थिला हमर कोन ना ब्रेन फर्स्ट ग्लोबल वायरस थिला ब्रेन एंड ये पाकिस्तान ने थिला 1986 रे पाकिस्तान सहित रिलेट करिवो 1986 सहित गाइस ओके ओके देन आसीबो कोन ना मैम लेही कोन ना ये यूएस रो गोटे वायरस ता सहित जीवन नेक्स्ट आसो दैट इज द कोन ना मिसेलेंगियो की हबो ना मिसे सॉरी मोरिस रे गाइस मोरिस ये भी हमर यूएस रो ये भी हमर यूएस रो मोरिस will be the right answer sorry ताको कोन ना 1989 रे that was the India रा first computer virus okay हां मोरिस सर को पचार दबो कंप्यूटर से देखि सर को पचार दबो हैला वेरी गुड जोतरे के म्यूजिक माने सेटर कोन हेतिला कहलो डेली 5टा बाजिला माने ऑटोमेटिक गीत बाजुथिला डेली 5टा हैला माने समस्त को कंप्यूटर रे ऑटोमेटिक गीत बाजुथिला ओके चलो नेक्स्ट मते को द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए इज डीएनए रा फुल फॉर्म कोन थिला डीएनए रा फुल फॉर्म कोन थिला को दैट इज द डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ओके
very good चलो next जीवा who is the fastest supercomputer in India अच्छा which is the fastest supercomputer in India रे कोटा मते कहलो fastest supercomputer in India रे कोटा अछि as of 2024 पचारि को मते प्रत्युष नो गाइस that is the प्रत्युष रहउची हमर गोटे weather forecasting computer प्रत्युष रहउची weather computer मिहिर कोन रहइबो ना मैम मिहिर गोटे मिहिर में हमर कोन ना that is the another weather computer this is data तो हमर कोन ना another weather computer then मते को राइट कोन हबो that is the कोन air what हां प्रणाम 8000 ना और किछि परम सॉरी परम 8000 नहीं परम सिद्धि एआई that is the कहि परिबा गोटे टॉप सुपर कंप्यूटर रे थिला बट ताकू क्रॉस करि छि के 2024 रे that is the air what परम सुंदरी हां परम सुंदरी चलो so that is air what the India's fastest AI supercomputer launched in 2023 okay very good कोथि पई AI रो used for the AI okay relatable चलो next मते को which gas is the major contributor to global warming पई तभी हुए थी चलो so which gas is the major contributor to the global warming सहित रिलेट करा मते guys global warming हाँ कौन हबो ना obviously carbon dioxide हमें कौन ना ग्रीन हाउस गैस भाबरे जानते the main greenhouse gas from the fossil fuel warning eta release hoji that is the deforestation maybe cause hoji that is the carbon dioxide relatable very good oxygen habani that is essential for the life not the hazardous one okay chalo next nitrogen helium these are the inert gas next mate ko which Indian mission aims to the study of the sun pai amara ko Indian mission jai chi kahilo kona Lagrange point सहित relate करिवो Lagrange point रे guys okay Lagrange point सहित आदित्य L1 हमारा lunar mission सहित चंद्रायन Mars mission कहूँ that is Mars mission मंगलायन सहित relate करिवो हाँ ना नहीं Mars orbiter mission MOM mission सहित relate करिवो AstroSat that is the India's fast space observatory गोड़ो कटलानी रे India's fast space observatory हमारा रहउची AstroSat तो मानकर स्पेस टेक्नोलॉजी की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की आपण मानकर डिफेंस टेक्नोलॉजी एगुडा एग्जाम रे पढले मजा आसींदा ना रे चलो नेक्स्ट में देखो 5G technology is mainly based on which frequency band हां ठीक है अल्प अछि ओ सारी देबा चलो so 5G technology is mainly based on which frequency band so different frequency band higher ही था different zone पाए रेडियो पाए different zone ही छी okay so मते को frequency band केते ना 3 to 300 gigahertz option B not कि 30 to 300 megahertz नहीं मेगा को ऊपर को जाओ that is the gigahertz ऐसा include द कोन ना सब wave spectrum को include कर clear 30 to 300 megahertz guys radio point that is radio point okay चलो very low latency clear जीबा रेडियो मीन्स हमर गोटे कोन एफएम रेडियो पई एटा एएम रेडियो पई एटा एएम रेडियो पई दिस वन एफएम रेडियो पई दिस वन चलो नेक्स्ट मते को which Indian city hosts the national space center of ISRO अच्छा space center of ISRO को किए रश्मि आरी बहुत क्वेश्चन अछि 11 है जीवो हां मिनती ढाबा मारले एमती डिलीट करिया को पड़े so ISRO रो space like हमर हेडक्वार्टर कोठी ना मैम बेंगलुरु रे अछि the headquarter of ISRO that is in Bangalore major research and कहि परिबा space control केबे established हेतिला ISRO केबे established हेतिला अल्बर्टो Bangalore रे अछि that I know very good first established हेतिला 1969 रे 1969 रे हमर रिसर्च स्टार्ट हेतिला 1972 सहित रिलेट करि परिबो ISRO रो ब्रांचेशन हेतिला ISRO भाबरे ता पूर्व से कोन का सहित ना इनकोस्पायर सहित थिला इनकोस्पायर रो सेपरेट हेतिला गोटे सेपरेट फील्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ DOS ए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हमर केबे हेतिला DOS 1972 रे ता अंडर बस हेतिला ISRO ओके चलो
स्टार्टिंग इसरो गाइस स्पेस रिसर्च रो इसरो स्टार्ट हेनी आयोनोस्फीयर सहित रिसर्च करिवो एसके मित्र ताकू स्टडी करथिले ओके से डिफरेंट स्पेस टेक्नोलॉजी जानिबो एबे जानानी मते को हैदराबाद रे किछि अछि कि हैदराबाद रे रिमोट सेंसिंग हमर कोन सेंटर अछि दैट इज द एनएसआरसी बोली जानि छे चेन्नई सहित नाही आपण माने पुणे सहित रेडियो एस्ट्रोनॉमी को रिलेट करि पारि चलो नेक्स्ट मते को व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन हमर जो हमर कोन ना मैम अब्दुल कलाम आइलैंड अछि कोन अछि ओडिसा सहित रिलेट करि परिबो ओके चलो नेक्स्ट मते को हां नेक्स्ट को व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज फ्यूल रिलेट करो कहा को ऑल को हां की ऑल तमर यूज होची कोठी तम घर कोठी सब गवर्नमेंट ऑप्शन देखले डेई पडुचो सब बेले मन रखता न्यूक्लियर जोठी आसिला सेटा माने यूरेनियम को चूज करिवे ओवर द थोरियम प्लूटोनियम यूरेनियम केते कहिची चिल्ले कहूचे फिर भी जानि पारुना यूरेनियम 235 को यूज हुए एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर भाबे yes or no yes guys that is the main fuel in the nuclear reactors thorium guys that is a fertile material like india रे हमरे बहुत जगह रे fertile material like thorium present अछि but still ता परे आउटिके ध्यान दिया जीवो हां की घर डी हमर हरिहर चलो सो प्लूटोनियम हमरा प्लूटोनियम टा सॉरी प्लूटोनियम टा गाइस कोन ना गोटे ब्रीडर रिएक्टर भाबे यूज करा जाय एज अ ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम हमरा यूज हुए एंड ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल हबा चलो नेक्स्ट मु जानि छी एटा मु एति पे रखिली ऑल ऑफ दिस नल रखि न था त माने जानि छी गवर्नमेंट ऑप्शन को ही चूज करियो इहु मारे कोड तमे जाउचो तुम दर्शन मिलुनी गोटे डीएसएल टिके दर्शन खंडे पठेइलो 10-15 टा नेक्स्ट चलो व्हिच इंडियन इनिशिएटिव प्रमोट्स द डिजिटल गवर्नेंस व्हिच इंडियन इनिशिएटिव प्रमोट्स द डिजिटल गवर्नेंस रिलेट करो कहा सहित वेरी गुड दैट इज द डिजिटल इंडिया कोन केबे लॉन्च हितला डिजिटल इंडिया मते कहिलो ना मोदी जी का सरकार आसिला परे 2015 रे मेक इन इंडिया गाइस बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग booster is the make in india startup india guys कोन that is encourage the entrepreneurship that is the startup india skill india hele कोन अब that enhance the workforce training को skill india कहूचे did you gky दिन दयाल ओके ता साथ रिलेट करबा skill india डेवलपमेंट क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट which planet has the largest number of moons को planet रो largest number of moons हमर प्रेजेंट अछि मते कहिलो कहारो अर्थ रो ओनली गोटे मून अछि आम मामू जन्म मामू हैला वन मून ओनली तमर मामू मोर मामू आमर मामू जन्म मामू चलो सो राइट कोन हो दैट इज द जुपिटर सो द 95 केतेटा 95 मून्स अछि एज ऑफ 2025 गाइस एटा काउंट करा दैछि कोन ना 95 मून्स अछि जुपिटर रो लार्जेस्ट किए अमंग देम लार्जेस्ट इज द गैनीमेड किए गैनीमेड गाइस रिलेटेबल वेरी गुड Saturn hey Saturn which planet has the largest number of moons सबुटु माने बड्डा मून अछि कहा पाखरे दैट इज द गैनीमेड अछि 95 अछि जुपिटर सैटर्न तो मु जानि दैट इज द 146 मून अछि बट जुपिटर रिसेंटली ओवरलुक करिछि ओके कारण बड्डा मूनटा या पाखु पळे आसिला ना बड्डा मूनटा या पाखु पळे आसिला लार्जेस्ट पचारिछि हैला नहले तो 146 सहित तमाने सैटर्न को चूज करि पारिबो क्लियर वेरी गुड चलो तो मार्स रो बहुत ही माने दीटा स्मॉल मून अछि दैट इज द फोबस आ गोटे के थिला डेइमोस के ना मैम फोबस एंड डेइमोस दैट इज टू मार्स रो चलो नेक्स्ट मते को द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई बहुत वाईफाई टाणु छ ना कि बहुत वाईफाई टाणु छ 146 ने 274 की हैं 274 ना 146 आ उधर चेक करला मु तो जानि 146 274 के बेला ओके गो द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई रो फुल फॉर्म कोन ग्रे टाणी लेवल को टाणु छ फुल फॉर्म काई कोन ना यस दैट इज द वायरलेस कोन फाइडेलिटी कोन टेक्नोलॉजी फॉर द वायरलेस नेटवर्किंग दैट इज द वायरलेस फाइडेलिटी क्लियर चलो नेक्स्ट मते को द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करी की रखिछि कोथिरु प्रोटेक्ट करी की रखुछि दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेज दैट कॉजेस द स्किन कैंसर
So I कहि पारि कि the harmful UV radiation blocked by the ozone and that prevents the skin cancer and our different type रो कोन ना मैम skin contraction. Clear? Infrared that causes only heat. X-rays आपण मान जानि संदी कोथरे ना मैम X-rays एमितिरे blocked by the atmosphere हमें जानि छै ओजोन लेयर तो ये आसेनी and हमें X-rays को यूज करछे imaging रे. Clear? चलो next. Next को which is the first messenger RNA based COVID vaccine approved? Relate करो. मैम मु क्लास रे अछि ना हां क्वीन लिजा तमे अच्छो क्लास रे yes you are in the class चलो so which is the fast messenger RNA based COVID vaccine कोविशील्ड पक्का पप्पा कोवैक्सीन कौन थिला that is the inactivated vaccine थिला first inactivated virus vaccine India रे थिला that is the covaxin covishield that is the viral vector vaccine but कोन ना BioNTech कोटा हबो the first approved एटे messenger RNA vaccine पचाची 2020 रे approved हेतिला Pfizer कोन ना Pfizer थिला that is 2020 रे messenger RNA vaccine पचाची कोडे मुंडटा नेकी रखुछ मुंडटा कोठी नेकी कहउछ लेट हे गेलो कोन ऑप्शन सी रे अछ एते टाइम केमती लेट चलछ या रेडियो वेव्स फाइन इज डिफरेंट सॉरी तम माने को ऑप्शन देखि मु कंफ्यूज स्पुतनिक बी गाइस दैट द एंडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन नेक्स्ट मते को व्हिच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी टाइड्स रु को एनर्जी ऑब्टेन्ड होउची मते कहिलो ऑब्वियसली टाइडल एनर्जी होबो ना कोन ना मैम टाइडल एनर्जी सन रु सोलर एनर्जी वाइंड एनर्जी कोटू ना ऑब्वियसली एयर रु आसीबो एयर मूवमेंट रु बायोमास एनर्जी दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर बहुत दिन जाय बहुत वर्ष धरि की माटी तळ रहि की बायोमास एनर्जी क्रिएट करन नेक्स्ट को इंडियास मार्स ऑर्बिटर मिशन इज पॉपुलरली कॉल्ड एज कोन इंडियास मार्स ऑर्बिटर मिशन केबे हेइथिला मते कहिलो केबे हेइथिला द ईयर मते कुआ ईयर ता टिके कहिलो मम तो आपण माने जानिसनी समस्त फेमस मम तथापि बी आसुची ज्योतिर बी आसुची चंद्रयान मार्स सहित ऑप्शन बी चंद्रयान वाह परफेक्ट फिर भी देखो प्रतिम आसिले प्रतिम भी मारसन बी हां ना यस द ईयर इज 2013 विद्या बालन रो अक्षय कुमार रो मूवी तम माने देखिनो जाई आज देखिबो क्लास करले हैला चलो सो द फास्ट हम कहबा इंडिया इज द fast country to reach the Mars orbit so this is the proud moment for us clear chalo Chandrayaan is the moon mission astrosat is the space observatory aditya one is the sun mission or solar mission CRISPR is the technology used in acha एबे मते कहिलो CRISPR technology CRISPR Cas9 हमरा कोन molecular feature ता साथे रिलेट करछे कहा को space research gene editing communication or robotics कहा साथे रिलेट करछे मते को ऑप्शन बी पक्का मु जानि छी बहुत पिला माने सी डी भयंकर लेवल त माने मारिबो भयंकर लेवल देखो ना सी बी पूरा गद्दा है सालानी सी बी that is gene editing tool guys not C communication point 9 that is a gene editing tool that is Nobel prize भी मिली जो 2020 रे या पाई Nobel prize 2020 रे ए gene editing CRISPR पाई पाई चंती ओके किए ना दी जण पाइचंती जेनिफर नाटा मने पड़नी जेनिफर दौधा तांका सहित तांका जणे पार्टनर से एक नोबेल प्राइज पाइचंती क्रिस्पर को कोन इन्वेंट करी ओके दैट इज द जीन एडिटिंग टूल जीन साइलेंसिंग करूची जीन एडिटिंग करूची कोन जानचो तम माने देश दुनिया कोडे गलानी तम माने कोठी अछो ना रे तो चलो व्हिच इंडियन स्टेट लॉन्च द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हमर फर्स्ट टाइम पे हेची कोठे कहलो रिलेटेबल जल्दी जल्दी गाइस जल्दी दैट इज दिल्ली रे कोठी दिल्ली रे गुजरात ना कोठी गुजरात रे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेट करि परिबो गुजरात रिलेटेड विथ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट केरला दैट इज द ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को से पॉलिसीज को बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करिछि कर्नाटक तो बिल्कुल नहीं राइट आंसर दिल्ली नेक्स्ट जीवा
कौन हम ना मैम दिल्ली ही 2023 रे लॉन्च करी सारची दिल्ली 2023 रे लॉन्च करी नेक्स्ट मते को द जेम्स वेब टेलीस्कोप इज मेनली डिजाइन्ड टू स्टडी अच्छा जेम्स वेब टेलीस्कोप हमर कोथि पई डिजाइन करा जायछि मते कहिलो द जेम्स वेब टेलीस्कोप इज मेनली डिजाइन्ड टू स्टडी द अर्ली यूनिवर्स yes guys early universe and it is launched 2021 रे कहा द्वारा ना नासा द्वारा what the hell okay NASA द्वारा है clear is that clear that studies the first galaxies exoplanets infrared observation everything is that clear very good चलो earthquake seismograph से रिलेट करियो artificial intelligence chatbot launched by Google is गोटे artificial intelligence chatbot launch करी छी Google that is the ना कोन हमें कहू छे कहिलो तार ना कोन कहू छे हां कि chat gpt सेटा open ai chat gpt okay that is the open ai chat gpt किछि भूल करछो सब भूल करछो Bard करो 2023 रे competitor of the chat gpt is Bard जाको Google launch करी छी 2023 रे launch करी छी केबे 2023 रे launch करी छी guys किछि भी Alexa तो मन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित रिलेट करछ Alexa कहीं जाउछ रे एटा तो Amazon रो Alexa Amazon रो Siri Apple रो एटा जानना हेलो Alexa hey Siri किछि भी नेक्स्ट which planet is called the earth twin भाबे रे हमें को planet को जानि छी earth रो twin भाबे रे हमें को planet को जानि छी मते को that is your favorite my favorite कौन morning star evening star and that is the Venus ये ना ma'am that is Venus that is smaller in the size and कोई परिबा ना smaller नहीं that is similar in the size mass and gravity okay very good चलो earth रा twin star एथि पई because of the similar in the size mass and gravity clear चलो next mercury mars ए विषय कहि छी mars को कोन ना red planet को आसे mercury को कहबा that is the closest planet to the sun neptune outer to the gas giant हमें कहूचे next आसी जा the first cloned sheep was named अरे guys गोटे sheep को ना पूरा cloning करके same to same copy paste कर देथिले cloning करके copy paste cloning तो photo cloning हुए जानि थिबो but cloning करथिले ताकू कहा को 1996 रे हिथिला स्कॉटलैंड रे एटा मन रख डॉली की करथिले 1996 रे एंड कोठी मैम स्कॉटलैंड रे that is dolly the ship डॉली मोइत पे आंच त माने कला कंफ्यूज हबो कोन मोली डॉली पोली जॉली जहां ना पाली मार देली हो हैला चलो दैट इज द फर्स्ट मैमल हमें कहि परिबा क्लोन्ड फ्रॉम द कोन एडल्ट सेल रु एटा हेतिला कोदरु ना एटा को कोनते हमें कोन ना सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कोन एको को जाय मन रखिता केबे जस्ट फॉर योर नॉलेज एग्जाम में तो तमर आसीबनी तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एटा ओसीएस जो माने दोजो तांको हेल्प करिवो न्यूक्लियर ट्रांसफर ताको को जाय हैला next mate kuha the largest renewable energy source in India as of 2025 largest renewable energy kuha mate remind to question reminder दउछ तमे बबलू अरे वाह त मते कुआ largest हमें कहा कहूचे largest renewable sources माने solar ये आसीबे obviously solar ही आसीबो राइट हमर इंडिया क्रॉस द 70 गीगावाट कैपेसिटी 2025 रे केते ना 70 गीगावाट रा कैपेसिटी क्रॉस करी छे 2025 रे मन रखो with that solar is the largest renewable source of India is that clear very good चलो next मते को which Indian organization is responsible for the nuclear energy research सहित कहा को रिलेट करिवा कहलो न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च सहित का रिलेट करबा इसरो को त माने जानि छ कोन ना मैम दिस इज द स्पेस रिसर्च ह ना नहीं मते कहलो करंट इसरो रो करंट चेयरमैन की अछंती मते कुआ करंट इसरो रो चेयरमैन एबा कुआ बार्क जानि छी बार्क रो फुल फॉर्म कोन लिखिलो दैट इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
एंड ए बार केबे एस्टैब्लिश्ड हेतिला मते कहिलो कोठी हेतिला केबे हेतिला ना मैम ये हमर मुंबई थी हेची एंड ईयर आई थिंक 1995 बोधे 1995 बोधे हाँ ना यस 95 यार कौन कहूची मु सॉरी 55 1955 बोधे 95 कहली 1955 ना 50 अरे यार 1950s ही कहि दियो मोर एग्जैक्टली मने पड़नी 55 ना 54 50 1950s ही कर दियो बाकी तो तुम टिके चेक कर दबो रिलेट मने पड़नी टिके सॉरी ठीक अछि 1955 ना so DRDO is what now that is the defense research defense by am use करूचे that is the DRDO then CSIR is what now that is the general scientific research में हमारे CSIR को स्टडी होची 1955 तो ना 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 अलिस कहला 1954 yes that is 1954 guys not 5 yes clear so back will be the right answer Bhabha Atomic Research Center yes or no yes sir very good chalo nuclear power nuclear reactor fuel cycle research everything is done here in the back so how was the class let me know 3499 guys rahi price 1.5 year validity with that CGL batch RI batch ye under asijibo and 1.5 year bhitare jete bi odisha exam mein mane comment examination asibo that to one day only seda amra sob itare complete heisibo do contact to this number same for the teaching also next guys kahibi क्लास एंड रे आपण मानन को पीडीएफ मिलुची टेलीग्राम रे जो माने ओरिड अछंती वेयर टू फाइंड वेयर टू गेट द पीडीएफ देन यू कैन इजीली स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड आपण माने जाई कि जॉइन हेई परिबे एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी यू कैन फॉलो देयर फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर क्लास रिलेटेड किसी भी ओके अरे डॉक्टर वर्ड नाही हो तमे टिके बुझु ना एमिति कोन हो छ एते लेखिया को पड़ले टिके गारी हे जाय अच्छा ओके गाइस क्लास भलो थिला ना नाही मते कुआ क्लास भलो लागिला ना नाही मते कुह इज हेल्पफुल थिला ना नाही रिवीजन थिला ना नाही त मानकर एसआई पई एटा बहुत ही हेल्प करिवो मार्क माय वर्ड्स ओके चलो ओके थैंक यू गाइस जिबा सोइबा बाय बाय गाइस टेक केयर yes satisfied so bye bye guys take care of yourself but before that do prioritize your parents this would be your first priority no one else in the world या फिर आउ कहार कोन डाउट अछि मते टिके पचारो आई विल कवर दैट कारण हमर 11टा सॉरी 11टा 10टा जाइथिला ना कि 10टा हेइनी एंदी काई होचो किछि डाउट अछि को क्वेश्चन ने टिके पचारि दियो गोटे क्वेश्चन नंबर तमन कहितिली ताको टिके गाइस चूज कर दबो हैला ताको टिके करेक्ट करि दबो ओके देवी प्रसाद मोर सबुदिन राति 10टा रे क्लास होची ओडिसा जीके वाला क्लास एंड जेहेतु आपनकर एग्जाम पाखे आछि त मु साइंस मैराथन आपनकर करूची मझरे मझरे गोटे गोटे साइंस मैराथन करके आपनकर टोटल साइंस रे को मु कवर अप कर देबी देवी प्रसाद डेली राति 10टा रे मोर क्लास होची एंड दिन 11टा रे टीचिंग रे चैनल रे क्लास होची वेदांग क्लासेस रे दिन 10टा रे क्लास होची एंड वीकली 2 टाइम्स आई थिंक 2 डेज अछि मोर ना वीकली 3 डेज अछि वेदांग टीचिंग मैम मॉक टेस्ट नेबार अछि गाइस सुषमा माझी प्लीज जो नंबर तुमको मेंशन करी छी ना इठी ए नंबर को टिके कांटेक्ट करि दबो चलो ए नंबर को कांटेक्ट करी की त माने डाउट क्लियर करि दबो एंड किछि भी जदी माने मॉक टेस्ट नेबार अछि एनीथिंग गाइस ए नंबर को कांटेक्ट करके पछार दो क्लियर गुड नाइट गाइस थैंक यू सुषमा यू आर मोस्ट वेलकम जिबा किछि तो कहार क्वेरीज नाही आज क्लास सब बुझि जाइछो ना रे हना
आज क्लास सब बुझी जाइछ किछि भी डाउट नाही वाह केते बढ़िया पिला तुम माने ना मैम जियोग्राफी रो गोटे कंफ्यूज्ड अछि भक्त बंधु जियोग्राफी रो कोन कंफ्यूजन अछि जियोग्राफी क्लास काली तो नाही ट्यूसडे आई थिंक आपनकर अछि सेठी पछाडिबो मु क्लियर कर ओके वेदांत टीचिंग में ठीक अछि बार्क 1954 मु कोन करथिली कि ठीक चेंज कर दे जदी बार्क रिलेटेड तो किछि करि नथिली आई थिंक यार रिलेटेड थिला बार्क हाँ 1954 यस 1954 मुटा चेंज कर देथिली 1954 एंटरटेनमेंट कर देथिली पिला 1955 कहउतिले बट 1954 मु करि देछि हैला इंस्टा रे मेसेज रो क्वेरी दबो तमे काहे कि रे इंस्टा तमे फॉलो करो मु तम मानकु सेठी लाइक क्लास स्टार्ट हेले कि किछि न्यू अपडेट आसिले मु सेठी पोस्ट करूछि हाँ हाँ किड्स फैंटासी वर्ल्ड हाँ अपडेट हे गली मधुस्मिता मु तम मेसेज देखिछि मु तम मेसेज देखिछि यू रोट दैट यू आर मैम यू आर वेरी ब्यूटीफुल देखिछि तो माने कहितलो ना लास्ट को मैम हम सहित टिके रहिबे टिके चिटचाट हमें करबा सेति लागि मु पिला माने तम सहित अछि जो माने क्लास को सब्सक्राइब करिन कही कही तम माने सुनुन काई सब्सक्राइब करूना क्लास को टिके सब्सक्राइब कले हबनी माने सब्सक्राइब न करिवो देन बेल बटन को टच न करिवो क्लास असले तमे जानिबो केमति Kids Fantasy World, all the very best for your examination. Who is examination? Excise inspector की exercise की गीत फीत आंटोलिना हबनी मो द्वारा मैम जीवा भोक लागलानी मत भोक लागिनी मु काई जीवी को मते चलो किछ नहीं जस्ट किडिंग थैंक यू गाइस टेक केयर बाय बाय मैम को घर ढेंकानाल बाय बाय गाइस टेक केयर